There is a nice gap down opening. Market is flat, but if you look at the prices of the puts, they opened gapped up from 32 to 44. That's huge, considering they're only minus 0.2%. Let me know if you guys are hearing some kind of echo. Okay, so let's start doing the analysis. First of all, let's do the spot analysis. I'll go to Nifty. Nifty में क्या सीन है देखते हैं. Nifty में we are looking at a 15-minute chart. Let's look at the daily. Daily it made a open equal to high yesterday and collapsed all the way down but closed above. Now there is a continuation of the fall because we are at this resistance level. Okay. At that resistance level there was a gap up, but it could not sustain. So now at the 30-minute हमने ये लेवल मार्क किया है, रेजिस्टेंस लेवल. अनदर स्विंग हाई, इसको भी रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है. एंड अभी नीचे की बाजू ये जो जोन था जहाँ पे कंजेशन था, यहाँ पर देयर इज सम काइंड ऑफ सपोर्ट जो उसने कल भी लिया, सेकंड टाइम लिया है, एंड नाउ अगेन टुडे मॉर्निंग यहीं पे थोड़ा सा हल्का सपोर्ट लिया, बट विल सी हाउ इट गोस. नीचे का जोन ये है. सो दिस एंटायर जोन इज फ्रॉम 9142 टू 946. यहाँ पर एक सपोर्ट है. उसके बाद अगर नीचे आया तो वो डेफिनेटली गैप फिलिंग के लिए जाएगा, एंड इस कंजेशन जोन में यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है. उसके नीचे डायरेक्टली सपोर्ट है एंकर वीवेब का जो आता है नीचे से. आई विल शो यू. डेली टाइम फ्रेम के बॉटम से आ रहा है 19,600 लेवल पे. यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दैट बिकेम सपोर्ट, ये लेवल. तो इस एंटायर जोन 815 से लेके सॉरी 600 से 630 यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है. तो नीचे की बाजू ये सपोर्ट है, ये अभी हम चार्ट पे रखेंगे एवरी डे. सो वी हैव इट. अभी हम जाएंगे 15 मिनट्स में. फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ओपन इक्वल टू हाई अगेन. आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी है. दिस इज आवर 5 मिनट. Nothing else in 5 minutes. This is the exact level. 20,040 and 19,946. तो 100 पॉइंट का रेंज है जिसमें मार्केट कल मैक्सिमम टाइम उसने यहाँ पे स्पेंड किया. अभी विच साइड इट ब्रेक्स आउट, कौन सी बाजू ब्रेकआउट करता है वो हमें देखना है. ये था निफ्टी का. नाउ विल गो टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी वीकली चार्ट. रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 46397. इसके अलावा एक रेजिस्टेंस जो उसने आज बनाया है, दिस वीक बनाया है, ये जोन. विल गो टू डेली. सपोर्ट डेफिनेटली नीचे है
all the way down on a weekly chart. We'll go to daily. डेली चार्ट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया था, उसी लेवल के पास उसने कई ओपनिंग करके कल गैप डाउन किया है। गैप डाउन मतलब फुल डे डाउन किया है, ओपन इक्वल टू हाई कर। आज गैप डाउन ओपन करके अभी के लिए इट्स फ्लैट। गोइंग टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में दिस वाज द हाईएस्ट लेवल, दिस इज द सेकंड स्विंग हाई, एंड यहाँ पे वो इनसाइड फंसा हुआ है। अगेन दिस लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बना हुआ है। एंटायर जोन छोटा सा जोन है, ठीक है। सो इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है देन इट विल डायरेक्टली गो टू दिस एंकर्ड वीवैप, जो यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए भी होगा। दैट मीन्स दिस लेवल एंड दिस एंकर्ड वीवैप विल कम। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 45,169 आफ्टर दिस लेवल, और उसके बाद ऑल द वे नीचे यहाँ पर विच विल बी अराउंड 800। तो बैंक निफ्टी में ये सीन 5 मिनट्स चार्ट में अगेन निफ्टी के जैसे ही साइडवेज में है कल से आफ्टर दैट फॉल। इफ देखा जाए तो फ्रॉम मंडे 11 o'clock से लेके इट इज ऑलमोस्ट इन दिस सेम साइडवेज एरिया। तो जिस किसी भी साइड ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया था लेकिन सक्सेस नहीं गया। अब जिस साइड पर वो ब्रेकआउट करेगा वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज हाउ द प्लानिंग इज द स्पॉट साइड। ओके, अभी लेट्स गो टू कॉल एंड पुट, निफ्टी कॉल एंड पुट। पुट ने अच्छा गैप अप ओपनिंग किया बट कुल नॉट सस्टेन, राइट। और कॉल, ये मंथली कॉल एंड पुट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ऊपर मंथली कॉल एंड पुट है। ये मैं नॉर्मली 15 मिनट चार्ट्स के लिए देखता हूँ, हायर टाइम फ्रेम। कॉल में स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, बट ये 15 मिनट सेटअप है, मतलब कि दिस सेटअप कैन गो ऑन फॉर 2 days। बहुत ही अच्छी चांस है यहाँ पे। विल जस्ट वेट फॉर इट टू क्लोज अबाउट द सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो गया तो अगर आप देखो ये जो हल्का सा सुपर ट्रेंड है यहाँ पे, इसमें फेलियर्स, यहाँ पे एक टाइम उसने एंट्री लिया लेकिन यहाँ पे फेल हो गया, सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ। यहाँ पर एंट्री आया सुपर ट्रेंड का, यहाँ पे फेल हो गया। ये थर्ड एंट्री फेल हो गया। अभी अगर वो एंट्री आता है सुपर ट्रेंड में तो वी विल टेक दिस आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। किसी की हिम्मत नहीं होती अंदर एंटर होने के लिए, दिस इज द टाइम वी कैन एंटर। प्लस अपना सेटअप बन गया है, यहाँ पे ब्लैक लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, 15 मिनट टाइम फ्रेम मंथली चार्ट। ओके, ये कल की एक्सपायरी के लिए नहीं है, फंस जाओगे बहुत गंदी तरह से। ये एंट्री लेके बाद में ऊपर जा सकता है, उतने टाइम में तो आपका डीके हो जाएगा। तो डू नॉट एंटर फॉर कल एक्सपायरी, दिस इज ओनली फॉर मंथली एक्सपायरी with a 2 days in mind. Can you please comment and tell me अगर आप ये सब ड्राइंग्स देख सकते हो, मैंने जो स्क्रीन पे ड्राइंग्स किए वो आप देख सकते हो कि दिस इज न्यू, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आर यू एबल टू सी इट? आर यू एबल टू सी द ड्राइंग्स? अगर आप ऑनलाइन हो कोई तो प्लीज, मालिन, यू आर एबल टू सी ना? थैंक यू सो मच। I was just testing this tool, so now I understand. Okay. तो अभी भी मैं बुलिश हूँ मार्केट के लिए, डेफिनेटली बुलिश हूँ, and the only criteria is that we want that closing in the 15 minute to come above this candle, about this super trend.
बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे, ब्लू लाइन भी नीचे नहीं आया, गुड सेटअप। लेट्स डिलीट दिस लाइंस। तो अगर कॉल है आपके पास तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो अभी मत एंटर कीजिएगा, एंटर वंस द सुपर ट्रेंड क्लोजेस अबाउट। ये लंबा ट्रेड है 2 दिन का, सो इसमें घाई मत कीजिएगा, ये ब्लैक लाइन अभी भी नीचे आ सकती है, एक और रेड कैंडल बन सकती है, येलो लाइन तक आ सकती है। तो अभी 200 का प्राइस है, इट कैन कम टू 145 ऑल्सो, तो डू नॉट बी इन अ हरी, लेट इट क्लोज हो जाने दीजिए उसके बाद। टिल दैट टाइम मंथली पुट वीक है, थोड़ा महंगा वाला पुट लगाएंगे, 20,000 पुट। यस, पुट अभी भले पुट ऊपर हो, बट लुक्स लाइक कॉल साइड पे ही ट्रेड है। नाउ दैट वी हैव एनालाइज्ड द मंथली, हम एक टाइम नजर डालेंगे ऑन दी वीकली चार्ट। व्हाट इज द वीकली चार्ट से? निफ्टी 19,000 20,000 सी, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट चार्ट में उसने बेस बना के ऊपर जा रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मूड है, उसने वी शेप रिकवरी है, मतलब के चांस है अगर उसने सुपर ट्रेंड ब्रेक किया, ये वी वेब पे रेजिस्टेंस लिया है, but once it comes down little bit again goes up and breaks this, अगर इसको तोड़ा उसने तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, बट आई विल सजेस्ट टेक इट इन अ मंथली। कल एक्सपायरी भी है, इसका डीके काफी हो सकता है, तो बेटर है कि सेफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी में ले सकते हैं। थैंक यू विनीता। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका भी एक टाइम चार्ट देख लेते हैं। आज एल्गो ने भी ऑटोमेटिक ट्रेड ले लिया कॉल साइड पे, ऑलरेडी एक ट्रेड ले लिया उसने, नाइस, दिन की शुरुआत अच्छी हुई। सुपर ट्रेंड 212 पर है, so if once it crosses 212 then it is a good, तो ये 15 मिनट कैंडल जो है फ्रॉम 9:30 to 9:45, ये कैंडल अगर क्लोज होती है 215 के ऊपर,
तो इट विल बी अ नाइस लॉन्ग ट्रेड, यू कैन इजीली टेक दिस ट्रेड टिल 250 260 तक जा सकता है, बट इट विल टेक टाइम। मैंने बहुत टाइम देखा है 15 मिनट वाला ट्रेड टाइम बहुत लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पास का दिखाता हूँ, लुक एट दिस, ब्लैक लाइन नीचे है, रेड लाइन ये फिर भी डेंजर जोन में था, 50 के नीचे आ गया होता तो हम नहीं लेते, यहाँ पे था तो हमने लिया, सुपर ट्रेंड लगा 34 पे लगा था, एंड दिस वाज अ वेरी लॉन्ग ट्रेड। ऑफ कोर्स वी वुड हैव नॉट वेटेड फॉर ऑल द वे, हम निकल गए होते, बट इट वाज अ गुड ट्रेड। अगेन वही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, बट जैसे मैंने आपको बोला घाई मत कीजिएगा, डोंट एंटर नाउ। इसको एक बार हो सकता है ये नीचे 147 150 तक आए, तो हमें घाई नहीं करनी है, वेट फॉर द ट्रेड टू कम, आएगा ट्रेड। यहाँ देखो कितना टाइम उसने स्पेंड किया, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। अगर घाई घाई में लिया होता, अगर हमने यहाँ भी लिया होता समझो नीचे आते वक्त, तो भी देयर वाज अ वेटिंग टाइम। इफ यू सी 6 सितंबर दोपहर के 1 बजे, तो एग्जिट कब दिया होगा समझो हमने यहाँ पे, नेक्स्ट दिन आफ्टर 24 आवर्स। तो इसके लिए पेशेंस चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। टिल दैट टाइम हम देखेंगे, अगर 1 मिनट में भी कोई ट्रेड मिला तो हम वो लेंगे, वरना ओवरनाइट ट्रेड हम इसका ले सकते हैं कॉल साइड का, पर अभी तक नहीं क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे है। थैंक यू सो मच प्रशांत, आपका लाइव फीडबैक इट्स रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। ओके, जैसे हमने सोचा था ये नीचे आ रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम। बेस्ट है कि अगर ये ब्लैक लाइन नीचे जीरो लेवल पे टच हो जाए, ये उसका बॉटम है, नेगेटिव में नहीं जा सकता वो। ब्लू लाइन इज कमिंग डाउन, तो उसको भी अच्छा स्कोप मिल जाए नीचे आने का तो और भी अच्छा है। तो विल वेट, मार्केट चाहेगा कि लोग पुट साइड घुसे एंड गे गेट ट्रैप्ड, तो वी विल सी एन अपॉर्चुनिटी अगर बैंक निफ्टी कॉल में है कि नहीं। बैंक निफ्टी 45, क्योंकि आज एक्सपायरी है। अच्छा जाने दो उसको नीचे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम वेट करते हैं। यहाँ पर जैसे दोनों नीचे आ गए थे, रेड एंड ब्लैक लाइन, इस एरिया में थोड़ा फॉल हुआ और एंड देन द प्राइस शॉट अप। मे बी सिमिलर थिंग कैन हैपन यहाँ पे, वंस बोथ द ब्लैक एंड रेड लाइन दोनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सब नीचे था, यहाँ भी ऑलमोस्ट सब नीचे आने वाले।
तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वेट करने के चक्कर में हाथ से निकल जाए, विच इज फाइन, बट विल वेट। स्पेशली आज एक्सपायरी है, इसका आज लास्ट दिन है। मैंने बहुत टाइम ऐसी मिस्टेक की है कि एट दिस पॉइंट देखो तो ये ब्लैक लाइन नीचे आ गई थी, यहाँ पे आने के बाद ऑल दिस वर अबाउ, सब सेटअप सही लगता था। ऊपर ट्रेंड ने ब्रेक किया इस लेवल पे, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। क्योंकि बहुत टाइम देखा है कि ब्लैक लाइन ऑल द वे नीचे नहीं जाती है, तो मैंने यहीं पे एंटर कर लिया। ऐसी भी मिस्टेक हुई है, और उस टाइम पे फिर आई रियलाइज फ्रॉम माई मिस्टेक कि स्टॉप लॉस आई नीड टू कीप अ लिटिल सेफ, येलो लाइन तक का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन प्ले। अगर 2 दिन का ट्रेड है तो उसको स्पेस देना पड़ेगा कि वो नीचे आ सके, देन इट कैन गो। अभी फिलहाल वही है, प्लस मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, 20,000 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो डिफिकल्टी तो है ही, यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है। विल वेट, वी विल हैव टू वेट, बेस्ट ऑप्शन वही है। थोड़े टाइम के बाद हम लोग ऑप्शन चेन भी चेक करेंगे, पर अभी के लिए लेट्स वेट। नाइन 40 है अभी टाइम, मार्केट 940 से ऊपर जाएगा कि 1040 तक वेट करेगा। 1040 कुछ साइड देख लेते हैं, अपने को बायस में नहीं रहना है, यू डोंट वांट टू बी इन एनी बायस, तो कुछ साइड को एक टाइम समझ लेते हैं। इस लेवल यहाँ पे है, कुछ साइड अपने रेजिस्टेंस जोन में ही है, यहाँ से ब्रेकआउट करके फेल हुआ है। लेट्स सी कंप्लीट फेल हुआ है कि इट विल गो डाउन। पुट ऊपर चला गया तो कॉल डेफिनेटली ऊपर नीचे जाएगा, तो ये सुपर ट्रेंड के लिए वेट करना है अपने को। स्पेस तो है उसके पास, थोड़ी स्पेस है, पॉसिबल है कि पुट और थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेट्स सी।
ओके, सुपर ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, 30 seconds लेफ्ट. विल इट बी अर्ली? यस, आई थिंक आई एम गोइंग टू लेट दिस गो. मैं इसको नहीं लेने वाला हूँ. अगर ये सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा तो भी नहीं लूंगा, कि जब रेड लाइन ऑलरेडी इतनी नीचे आ चुकी है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टोटली नीचे आए. मोस्ट ऑफ द टाइम रेड लाइन कम्स डाउन. सिर्फ कुछ ही टाइम ऐसा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे इधर से ही घूम गई विदाउट कमिंग फुल्ली डाउन. Most of my experience says red line does come down all the way, except for only sometimes. यहाँ पे जैसे वो नीचे नहीं आके थोड़ा ऊपर जाके बाद में नीचे आ गया, ऐसा टाइप का सीन आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ. आई विल वेट फॉर अ रेड लाइन टू कम डाउन. आज एक्सपायरी है तो डेफिनेटली इट शुड कम डाउन फुल्ली. निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पे है. बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट ब्रेक करके इस लेवल पे आई हुई. एंटायर जोन साइडवेज है तो यहाँ पे सपोर्ट कहीं भी ले सकती है. दिस इज अ 5 minute चार्ट. Everything is coming down, so there is space on the downside. नीचे के बाद जो स्पेस है उसके पास, लेट्स सी हाउ मच डाउन इट कम्स. नीचे गैप फिल करने के लिए आती है कि नहीं. ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स है. इफ इट वांट्स इट कैन कम डाउन टू फिल द गैप और जस्ट टर्न फ्रॉम देयर. डजंट मैटर. वी आर गोइंग टू लुक एट दी कॉल चार्ट. कॉल चार्ट में सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ ऊपर की बाजू, अभी अगर तो नहीं लेंगे, और आफ्टर सम टाइम हुआ तो विल टेक इट इफ बोथ दिस लाइंस आर डाउन. दोनों नीचे आ गई तो we should look at Banknifty option chain. Okay, Banknifty option chain में maximum OI is at 45,500 call and 45,000 put. आज के दिन का maximum OI भी 45,000 put. And put में in the money में short covering चालू है, जबकि call side नहीं है. ऑप्शन चेन डेटा इज सेइंग थोड़ा नीचे और जा सकता है. कल ऑप्शन चेन ने अपने को दोनों बाजू पैप किया था. तो विल फोकस ऑन द चार्ट. यहाँ से नीचे आने के बाद वापस हायर हाई बनाना, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द पुट साइड. नहीं बना पाया, इज नॉट एबल टू मेक. अब ऐसे केस में एक चीज और ऑब्जर्व की है, 45,300 कॉल में इट इज नॉट कम डाउन राइट दोनों ने. बट इफ आई लुक एट सम अदर, लेट मी लुक एट 45,500. यहाँ पर दोनों लाइन नीचे आ गई. तो दैट मीन्स द जर्नी इज कंप्लीट. जर्नी कंप्लीशन हो चुकी है. यहाँ पर सुपर ट्रेंड पे आप ले सकते हैं. दैट मीन्स 45,300 में कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी हम लोग एंटर हो सकते हैं. दैट्स गुड. एक और चीज चेक करेंगे, 13 + 7 20th September नेक्स्ट वीक का 45,500 कॉल. डबल कंफर्म इट. यहाँ पे भी नीचे टच नहीं हुआ है, तो देयर इज अ स्कोप.
नेक्स्ट वीक वाला भी नीचे नहीं आया, तो हम लोग वेट करना ही बेटर है। वेट मिस हो गया तो चलेगा, बट वी वांट टू प्ले सेफ विद द मनी। But they did miss it. बिकॉज नेक्स्ट वीक में स्पेस बाकी है, प्लस दिस वीक में थोड़ी स्पेस है। ओनली 45,500 में वी सॉ कंप्लीशन, 45,400 में स्पेस बाकी है। So I will avoid it. I'll avoid this trade. Even though super trend लग गया है, I will avoid it. I'll wait for another chance अगर मिला तो। जैसे मॉर्निंग टाइम इज अ गुड टाइम टू टेक अ ट्रेड, 10:40 तक, 11 तक, but it's okay. Let's look at 15 minute. आज मेरा मूड इसमें ज्यादा है, सुबह से मेरी नजर इस पे है। मार्केट इज बुलिश अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये ब्रेक हो गया, डेफिनेटली 1 मिनट में तो बहुत पैसा बन जाएगा तब तक, बट ये और भी लंबा चलेगा फॉर 2 more days इफ दिस ब्रेक्स। निफ्टी कॉल साइडवेज है, जिसको स्कैल्पिंग करना है वो उसको इसमें मजा आएगा। जब भी ग्रीन लाइन ऊपर जाए बेचो, ग्रीन लाइन नीचे आए बाय करो, कीप स्कैल्पिंग ऑन some points, 10 points. I also do that a lot, but आज with live streaming impossible है, impossible. पुट ने उसी लेवल रेजिस्टेंस लिया,
एक बार और नीचे आ जा, then we'll take on the next super. Status of BPC. तो BPCL में कल एक स्पाइक था ना? Yeah, there was a spike. नहीं, वो किसी और स्टॉक में था. बजाज इलेक्ट्रिक. इतना बड़ा स्पाइक अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में है तो इमीडिएटली निकल जाता 100 पॉइंट नीचे. कमिंग डाउन. निफ्टी 82 के ऊपर बाइंग हो सकता है. देखो ये स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे. लेट मी शो दिस. यहाँ पर एक ग्रीन लाइन पर पहुंच गई थी. ठीक है, भी इसने नीचे आना चालू किया, पर अगर जर्नी ऊपर की है ऐसे तो इस लेवल को ब्रेक करेगा. इसी तरह अगर अभी का डेटा दिखाऊं मैं आपको, ग्रीन लाइन ऊपर पहुंच गई है, बट नीचे आना चालू किया. अगर ये ऊपर जाता है एंड इस लेवल को, ये मैंने अभी लाइन जो मार्क किया 182 पे, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो दैट मींस इट कैन आल्सो समटाइम गो बैक. एंड अपना एनालिसिस तो ये कहता है कि कॉल ऊपर जा सकता है. तो दिस इज दी प्लानिंग. मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब ट्रेड लेने बैठ जाऊंगा तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो.
because I'll be busy in taking the trade 182 के ऊपर. तो डाल देता हूँ मैं सिस्टम में. बैंक निफ्टी 45,300. ये स्ट्रीम अभी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो लोग लर्न कर सके हाउ दिस ट्रेडिंग इज डन, what is actually done on an intraday basis. It is not for any tips or calls. Kindly don't take that way. 173 है. 80. VWAP पास में ही है 188 पे. Then the next level is 193. तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा यहाँ पे. Let's see how it breaks through. इसी बार उसने ये बहुत दी. यहाँ पे उसको VWAP का रेजिस्टेंस आ सकता है, तो it's better not to take over here. No order placed. ठीक है. कुछ साइड में यस जैसा सोचा था वैसे हुआ. अच्छा हुआ हमने एंट्री नहीं ली थी, बिकॉज कई तो डाउट था कि ये क्यों कंप्लीट नहीं किया इसने नीचे. तो इफ यू सी सुपर ट्रेंड फेल हुआ है, सेकंड सुपर ट्रेंड लगा तो आई विल टेक इट. नाउ द गेम प्लान इज वेरी क्लियर फॉर मी. क्वेश्चन ये है कि व्हाई एम आई ऑन द कॉल साइड एंड नॉट ऑन द पुट साइड. ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑन द निफ्टी दिस इज द सेटअप, और ये सेटअप काफी बुलिश होता है फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days. नॉट इमीडिएटली, नेक्स्ट 1 or 2 days के लिए ये सेटअप बहुत अच्छा होता है, राइट. तो कभी ना कहीं से अभी ये टर्न हो सकता है, यहाँ से या तो यहाँ से. अब आई डोंट वांट टू प्ले फॉर दिस स्मॉल पॉइंट, आई विल रादर प्ले फॉर यहाँ से लेके यहाँ तक. दैट्स व्हाई इसमें से मुझे छोटा सा भी पार्ट मिल गया तो चलेगा, पर नीचे की बाजू इतनी सी जर्नी में मुझे क्या मिलेगा. फुल एंड टू एंड तो ले नहीं सकते कोई भी. दैट्स द रीजन. हायर टाइम फ्रेम में सेटअप बुलिश दिख रहा है, इसलिए अभी पुट साइड पे जाने की जरूरत नहीं. 143 पे आ गया. तो हम लोग 182 का लाइन बनाया था वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स डाउन. देख लेते एक टाइम कि क्या वो पहुंच गया नीचे. कमिंग डाउन. गुड. हमने किस लेवल पे सपोर्ट बनाया था? 45 320 से लेके
400 तक 80 पॉइंट्स का सपोर्ट बनाया है। यहाँ पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया है, which is normally people say bearish, but we don't take that candle. अगर गैप फिल करना है तो पैनिक फॉल देना चाहिए बड़ा सा, और अगर नहीं तो यही से घूम जाएगा। गो बैक। स्पीक वाला भी नीचे आ रहा है, ऑल्सो इज डाउन। देखते ही देखते वीवेप एंड द रेड लाइन ऑल हैव कम टू 182 लेवल, सेम लेवल तो हमने लॉगिंग ड्रॉ की थी यहाँ पे इस लाइन। अब ये परफेक्ट लाइन बन गई है, इसके ऊपर गया तो वी कैन एंटर दैट। सुपर 20 सेकंड लग चुका है, एक लगने के बाद सेकंड वन 159, so I can enter this trade now. एक्सपायरी डे है तो क्वांटिटी बहुत ही कम, 15 का एक लॉट साइज है, तो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी रखी है। अगर आज मैं निफ्टी में करता तो आई वुड कीप अ नॉर्मल क्वांटिटी, बट बिकॉज बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है, इट कैन बिकम जीरो, टोटल कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है, इसके लिए इट्स बेटर टू कीप अ लो क्वांटिटी। आई एम ऑलरेडी इन द ट्रेड नाउ। I got entry at 166.2. What is the price now? 177. Yeah, buying price. आइडियल सेटअप नहीं बना, बट ठीक है। कम क्वांटिटी इसलिए लिए कि अगर नीचे आ गया एंड आइडियल सेटअप बन गया तो मैं वापस से कुछ क्वांटिटी ले लूँ। काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम सपोर्ट के पास ही 182 ब्रेक हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा एकदम। 3 मिनट 15 मिनट्स का सुपर ट्रेंड तो बहुत ऊपर है, 215 पे। वन 166 पे एंटर हुए हैं। विल कीप दिस येलो लाइन एज 209। अराउंड 166.2 पर हमने एंट्री ली है।
350। ये मेन ट्रेड यहाँ पे है, तो कब आएगा पता नहीं। दिस इज द ट्रेड विच टेस्ट माय मैक्सिमम पेशेंस। और एक कैंडल 15 मिनट्स की है। Till that time we'll do this small trade, बड़ा वाला ट्रेड बाद में जब आएगा तभी। Big fall, going up, big fall, going up, big fall, 145. Is making a flag. अब नीचे आना है तो यहाँ तक आ सकता है। एक लास्ट ड्रॉप फ्लैग का यहाँ पे पॉसिबल है, बट नॉट टू पैनिक, वी कैन स्टिल स्टे इन दैट वे। वो जोन में फंसा हुआ है। Let me put the target in the system. $45,500 और नीचे पहुंच गया एंड ये बॉटम हो चुका है, आउट ऑफ द मनी।
60 rupees. As expiry day पे the stop losses are so deep now. That's why you have to keep the quantity small. आपका risk पे भी आपके total capital से छोटा ही आएगा. तो वही 140 पे इसका लो बना है, 135 पे हमने एंट्री किया 165, 30 पॉइंट्स. If one lot is 15 quantity, तो 30 points is 450 rupees. तो बहुत ज्यादा लॉट ले लिए गए, 10-15 लॉट, you can make big loss. नीचे 30 पॉइंट का रिस्क है और ऊपर 2008 मतलब 40 पॉइंट्स का टारगेट. नॉट अ वेरी गुड risk ratio. Intraday, expiry day, that's what you can get this. Ideally, the setup would have been waiting for this boat coming down. Just because 45,500 में पहुंच चुका है, we are taking this chart. In 15-minute Nifty. Taking its own time. एक बार ऑप्शन चेन पे नजर डाल देते. बैंक निफ्टी 49 lakhs at 45,300 put side. That is the current price, right? 45, हाँ, 50 lakhs. And यहाँ पे 22 lakhs, 49. तो ऊपर की बाजू भी 50, 50, 67 lakhs है. नीचे की बाजू 50, 40, 31 है. पुट साइड पे थोड़ा कम है, मीन्स शॉर्ट कवरिंग भी है. So yes, put side पे it is a chance it can fall. If that is happening, we have to keep a stop loss. I will keep a stop loss in the system. अभी के लिए I feel considering VWAP से अगर नीचे fall होगा, will come down all the way till here, ये stop loss लेके ही जाएगा. I'll keep a tighter stop loss. 160, 160 का stop loss, very tight in the system. Okay.
गुड, निकल गया 6 points बैंक निफ्टी में it took and we exited because the setup was not perfect. We're waiting for the right setup. Will come. $193 के ऊपर ये 1040 की वर्टिकल लाइन है नॉर्मली जहाँ पे बाइंग एक्सपेक्टेड है तो सिंस 940 वी वर सेइंग कि अभी लेगा कि 1040 को जाएगा ऊपर सिंस दैट इज गोइंग टू वेट लेट्स सी
took a scalping trade, very quick. छोटा scalping trade ले लिया यहाँ पे, just to recover the loss. We are good. I think we are break even. Good. Now we can take another trade. तो scalping भी क्यों लिया था ना? Simple reason है, because this thing came down. I told you this green line I use for scalping purpose. Top, bottom. I was waiting for green candle, red candles. एक finally green candle आई. Scalping trade ले लिया. 10 points, good quantity to clear up the mess. Now we are back on. Today my main goal is to take this trade. Nifty monthly chart, 15 minutes. This is the main trade and it is coming down. It's good. कि पहले यहाँ पे था 214 के ऊपर बाय करना है. Now the super trend level has come down to 192. बहुत ही अच्छा है. 192 के पास हम ले सकते हैं इसको. जहाँ तक 1 मिनट में इस ट्रेड का सवाल है, ऑन दिस लाइन यहाँ पे ये उस साइड पे बैंक निफ्टी इज इट डिड गो एंड हिट द. चलो ठीक है, हमने ट्रेड लिया, निकल गए, स्कैल्प किया, इस वाला ट्रेड मिस हो गया. और आज सी साइड ही दिख रहा है मुझे, नथिंग एल्स. फोकस ओनली ऑन सी साइड. दैट इज बुलिश साइड. हाई टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट है. This is a trade with big quantity which I am planning. 1040 पे बाइंग आना चाहिए था, फिर पहले आ गया. Now this is the difference. यहाँ पर भी you see it come down, price went up, right? But because higher time frame में call side पे है, तो put में if you want to take this kind of trade, you have to take it with a lot of, I mean less quantity. कि फिलहाल जैसे अगर देखिए these are coming down. You want to take, you have to take only with very less quantity because main goal is on the call side. Put में पैसा बन सकता है but quantity कम रखना, रिस्क ज्यादा है.
45,500 में मैंने आपको कल भी बोला था, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा जो आपके साथ शेयर किया था। जब ये सिचुएशन आती है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 आवर फॉर द टारगेट्स टू कम। 942 को आया था, कोई 1030 हुआ है, अराउंड बाय 1040 तक ये ऊपर इसकी हिट हो जाएगी फाइनल। 1 hour you have to give to want a good long trade. My bad luck that I missed this trade. और एक चीज, कम क्वांटिटी में जाना है पुट साइड पे, प्लस नेक्स्ट वीक इज बेटर। So if I go to side में 45,200 or 45,000, 45,000. Bank Nifty 45,000 put on the next week. This week is still coming down. Next week is also still coming down. If it comes, यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, बट नेक्स्ट वीक के लिए, बिकॉज रिस्क ज्यादा है उसमें। ना ले तो भी बेस्ट है, क्योंकि अभी क्या है ना, अगर कॉल को ऊपर जाना है तो व्हाट इट विल डू इज, द बेस्ट वे टू गो इज, एज वी ऑल नो, प्राइस विल नॉट जस्ट go up like this, come down to this pink line and again cross this. This is the time we can expect a book movement. I'll wait till here. Now this can only happen, my judgment is, if this happens before 11:40, 11:40, 12 o'clock, उसके पहले अगर ये सीन हो गया, ऐसा बन गया, तो that is a very good trade for full day. Means you can buy it over here and keep it with this stop loss for full day. ये इसको हम रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, प्राइस रिवर्सेस एंड इट कैन गो अप मच हाई, वन साइडेड मूव आ सकता है। बट बहुत कंडीशंस इसके लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन ब्रेकआउट, प्लस टाइम अगर ऐसा है तो ही आइडियल है। अगर थोड़ा लेट होता है तो बहुत ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं होगा। विल वेट फॉर दैट आल्सो। प्लान इज दिस। इन मीन टाइम कॉल साइड पे निफ्टी में 3 मिनट ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद है ना, कैश सेगमेंट में बहुत पेशेंस आ जाता है, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज सो हाई एनर्जी, so much emotions during the live trade. तो अभी भी टाइम है, 198 क्रॉस करने पे, अभी 190 पे। नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग विल हैपन एट 10:45 आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है, आइडियल सेटअप इज देयर। दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट अगर आपको एक ट्रेड ऐसा लेना है जो लेके आज के लिए भूल गए, नो, टेक इट एट 198, 200 के आसपास and keep it for 20% target, at least 20%, and then you forget about it. आज आएगा कल आएगा, doesn't matter. वो इस टाइप का ट्रेड है। फाइव मिनट चार्ट में 452 के ऊपर ही में कुछ नहीं।
It's coming for step number 2. It has to come down to this pink line. एक बार नीचे आ जाए, then if it goes up, we'll take it again. Will it come down for sure? No. अगर पता होता श्योर नीचे आने वाला है तो मैं पुट साइड पे ले लेता ना. ये क्या हो रहा है ना, पुट साइड पे जो हमने ट्रेड देखा था ना, ये वाला बॉटम टच हो गया था, इसको एक चांस मिलेगा. 5% 10% लोगों को प्रॉफिट देगा, थोड़ा यहाँ तक जाएगा. दैट इज गिविंग अ चांस. तो आई यूज्ड टू डू ऑल दिस स्कैल्पिंग. ये चांस मिला, इसको भी ले लिया, वहां भी ले लिया. बट अभी लाइव स्ट्रीमिंग में आई एम टोटली कीपिंग इट अंडर कंट्रोल, क्योंकि जैसे अभी मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले लिया वैसे आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ ट्रेड्स. एज आई टोल्ड यू, गया ना ऊपर. क्यों जा रहा है ऊपर? क्योंकि इधर कॉल साइड में इट हैड टू कम डाउन टू दिस पिंक लाइन. इट हैज नाउ कम टू द पिंक. थोड़ा और रहेगा यहाँ पे, एक दो कैंडल्स. देन इफ इट हैज टू गो अप, देन इट हैज टू ब्रेक दिस लेवल, ये लेवल. अभी तो नेक्स्ट वीक का है, अपन इस वीक का देखते हैं. दिस वन 231 लेवल्स 1140 के पहले है, तो बहुत ही अच्छा चांस होगा ये. लेट्स सी पुट साइड. अभी पुट साइड में स्पेस है, कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा ट्रेड. ये फुल डे वाला ट्रेड है. अगर ये ट्रेड मिला तो स्टॉप लॉस रख के हम लोग बंद कर सकते हैं. Either stop loss will get hit or we will look at the end of the day around 2 o'clock 2:30 को कितना मिला. Because target can be huge if it goes, because this is a reversal trade. I don't know who is online right now, but जो मैंने सिखाया है, if anybody who has already done options program with me, they will know what this trade is. 1040 का बाइंग यहाँ पे approximately same time पे अगर दे दिया उसने, ideal scenario. बहुत जल्दी है इसमें. कॉल में इतनी स्ट्रेंथ है, तो why is it not showing on the option chain? Option chain में let's go to 5 minute. Last 5 minutes में call side में there is a huge short covering. Yes, as I was expecting, आज market का sign ऊपर ही है. I'll keep the trade plan करके रखता हूँ मैं. ऐसे केस में stop loss क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, when we take a trade like this, ये learning के लिए है. Please understand, this is for learning purpose. When the price is falling down, then it finally breaks this yellow line, comes down, and again breaks this line ऊपर की बाजू. That is the time we take this reversal trade. And if this happens before 11:40, 12 o'clock, then we can stay in this trade for the full day. These stop loss के start. Stop loss will be over here. But it has to break about this and close about this. I'll keep my trade ready,
but we'll execute it when it comes. Closing आने दीजिएगा, wait for the closing, and stop loss is the VWAP line. VWAP is 184. 184 पे stop loss. Closing important है, closing आना चाहिए. Last few seconds. नहीं दिया closing उसने. It did not close. अभी ऐसे सीन में I will wait for the next candle to a little higher closing. Spot close आ गया. 234. Good. आप लोग ने जिन्होंने कोर्स किया है बेसिक, उसमें पहले सेशन में मैं आपको बोलता हूँ, सेकंड सेशन आई थिंक, कि आपको वॉच लिस्ट बना के वो कैंडल्स एवरीडे देखनी है, राइट? इफ यू रिमेंबर, one of the reason for that I will explain to you is there is a procedural memory. But the moment this thing has happened, right, automatically मेरे brain से एक signal आया कि ये वो pattern बनाएगा. I'll explain you what pattern, but it just comes automatically, right? I don't have to remember. So I'll tell you what is the next pattern I'm thinking. In case अगर अभी उसने breakout करके नहीं गया ऊपर, यहाँ पे उसने नहीं किया, okay? Or it can do, if it doesn't break out now, it will make a pattern like this, then fall down, come up again, and then break out. This will be somewhere around 12:30 के आसपास, or maybe 11:15. We don't know, but it can do this also. This is another option. Brilliant way to make people feel कि ऊपर जाएगा, कुछ लोग घुस जाएंगे यहाँ पे, कॉल में बाइंग करेंगे, will fall down, again buying करेंगे, fall down, उनकी हिम्मत टूट जाएगी, they will not be able to enter again,
when the actual time comes. So now if this is not going up right now, तो इसके बहुत high chances है do something like this, either one attempt में या तो फिर multiple attempts के बाद. ये पैटर्न बहुत टाइम देखिए मैंने, इस पैटर्न का कोई नाम नहीं है, जस्ट अ फैक्टर दैट यू सी अगेन एंड अगेन द मार्केट एंड इट गिव्स यू क्लैरिटी कि ऐसा हो सकता है. ये फॉल स्टीप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सब लोग बाहर निकल जाए, पैनिक हो जाए. दैट्स हाउ इट इज. ओके, अभी के लिए तो नहीं मिला हमको एंट्री, देयर वाज नो एंट्री, so we are not in. I took a small scalping over here, but now I'm not there. I was waiting for a closing. बीच में जो scalping trades है, I will not be giving them, discussing them live because it's very difficult to take the trade, explain it. Very difficult. So we'll only focus on the bigger trades, the longer trades. 15-minute किसी चार्ट में क्या सिचुएशन है? ब्रेक नहीं, अभी भी वही पे 197 लेवल. 10:45 candle will close and it looks like it is not going to close above. So setup तो पूरी तरह से ready है. There is nothing missing in the setup except that this blue line might want to come down. इसलिए it's taking time. If this blue line wants to come down, okay, what time it will come down? Let me tell you that. Number of failure. अच्छा, will either come down drastically at 115 or if the price falls, then it can come down even earlier by 11 o'clock. If the file falls till this level, what is this level? 163. अगर 10-20 पॉइंट नीचे आ गया तो 11 o'clock तक ही उसका ब्लू लाइन नीचे आ जाएगा. Otherwise, it can take up to, what was the time I said? Yeah, it can take up to 245. Oh my god. That happens, then बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा. But suddenly we have shifted from Nifty to Banknifty. The expiry है ना. 1040 time is crossed and price has already gone up, but now the next big move only about this level. Let's keep it ready. 40 seconds to go. 234 is the level. Not even attempting it.
234 के ऊपर closing that will confirm this full day trade with a stop loss same as 184. You already know your risk in advance 50 points. So one lot is 15, 750 rupees का risk है. Accordingly take the quantity. ऐसे ही blindly quantity मत लीजिएगा. 15, 30, 150. Don't do it that way. Risk calculate करके लीजिएगा. Do not go more than 1% of your total capital. कम मिलेगा चलेगा. इस कैंडल में तो क्लोज नहीं होगा. One more candle we have to wait. There's a lot of sellers or what? आप एक टाइम देखते हैं बहुत sellers है. Look at this. Total buy quantity 81 lakhs. Total sell quantity only 2 lakhs. ऐसा पहली बार देखा मैंने. इतना difference. Huge. इतने buyers कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? 2 lakh and 82 lakhs. 45,300 C. 45,300 C. Total OI 31 lakhs है. Total buy quantity 81 lakhs. Come on, short covering. Okay. Last half an hour से short covering हो रही है market on the call side. This market started. Yeah, the time when we saw 940 तब से short covering चालू. Oh, it closed. I take the 240 पे ना. I got it a little expensive at 239.15. 239.15. Fine price is here. अभी सबसे डेंजर चीज है. Now if it falls down and does what I told you, this type of structure falls down and goes up. ये जो fall होगा ना, panic fall, this will be scary because 80 points. That's why the quantity has to be low. Okay. We will exit over here at the stop loss. Then once again we'll buy it at the bottom. But that's the scary part. This is what can happen. Where is this one coming from? VWAP line यहाँ पे है. Moving averages are almost crossing over. Breakout line has been crossed before 11 o'clock. It's very early. This can be a trending day. Okay. But अगर ये fall होता है, तो it will definitely come to test this level. That is where the fear will come. All our emotions will come because we'll be in a loss at that time. We emotions control करने. Till that time, this is very good day. It's a trending day. We have entered a reversal pattern. Let's just stick it and hold it. 5-minute Nifty chart. Banknifty chart में क्या है? 5 minute के Banknifty. सुबह का जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था, वो सपोर्ट लेवल पे बॉटम बना के वो ऊपर जा रहा है. नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज एट दिस पॉइंट.
एंड दिस लेवल. सो 45,564. अभी हमने 300 वाला लिया है. 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 564 पे? 264. तो मींस व्हाट, दैट्स इट, 260. या प्लस थोड़ा प्रीमियम 20 पॉइंट, तो 284 300 एट द मोस्ट अभी के लिए वो टारगेट है. बट गिवन माय एक्सपीरियंस, ये जो लेवल है, मतलब दिस इज द लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 2 3 टाइम. विल कीप दिस एज अ सेफ लेवल. 300 के नीचे 1 पॉइंट आता गया. गैप डाउन भी हुआ था, गैप पार्शियली फिल हुआ है, अगेन केम टू द सेम लेवल. Will it fill this gap? And if it fills, then it will go and hit this target also, but not immediately. Not immediately. ये सब चीज को टाइम लग सकता है. मार्केट अभी 1053 है. There is still time left. अब 184 के अलावा कुछ नहीं देखना है. बस 50 पॉइंट्स इनटू जितनी क्वांटिटी है, 15 का लॉट साइज है, 750 रुपीज पर लॉट. तो वो आपका रिस्क है. ओके, तो अभी के लिए तो कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज अवर स्टॉप लॉस लाइन. दिस लाइन इज नॉट नीडेड. This is our target. Hold on. And just why are there 81 left? जिनका ट्रेड मिस हो गया है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगा जब ये पर्टिकुलर, मे बी इट विल कम एंड टच दिस पिंक लाइन. अगर मिस हो गया तो hopefully the purpose of this thing of teaching, learning live is getting solved. If you're liking it, then please put a comment so that I get a feedback. And if you are not, then also put a comment so that I get a feedback. अब इसकी जरूरत नहीं है. 1040 5 मिनट चार्ट में स्पेस.
ये नीचे क्यों आ सकता है ना 184 तक? एक तो एक्सपायरी है प्लस जो बॉटम बनाया था एक पैरेलल बॉटम, एक स्पाइक आ सकता है। एक्सपायरी डे है, क्वांटिटी एकदम कंट्रोल में, इमोशंस विल बी वेरी हाई। ऑपोजिट साइड में क्या है? पुट साइड पे एनी चांस दैट इट कैन गिव अस अ सरप्राइज? ये वाला पुट तो फेल हुआ था, जैसे मैं आपको बोला था इसमें बहुत कम चांस है, ये लेना भी नहीं चाहिए, किलो के नीचे आ गया। अच्छा, दिस क्वीन रीचिंग एट द टॉप एक टाइम पहुंच जाए उसके बाद कॉल भागेगा, तो पहुंच जाने दो। ये पुट का लाइन ऊपर तक पहुंच जाएगा उसके बाद कॉल भागेगा, लेट इट फर्स्ट कंप्लीट। जैसे यहाँ पे हुआ है, पहुंच गया ऊपर, देन कॉल भागा, पुट नीचे गया कॉल भागा, ये अभी जा सकता है ऊपर थोड़ा, देन वंस दिस रीचेस, तो ये नहीं क्रॉस हुआ है तो वापस से कॉल भागे। दैट इज अवर एंटिसिपेशन, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक, पुट इज गोइंग अप, जाने दो, यहाँ यहाँ तक जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ऊपर गया तो थोड़ा टेंशन, गोइंग अप। 11 o'clock होने वाले हैं, मतलब all 30-minute candles, 15-minute candle, 5-minute candle, they will all close, इसलिए it's waiting. Once the closing happens, the next candle will start and the movement will start either up or down. This is our call. एक मेथड मैंने अभी नई नई चालू की है, अगर कॉल में एंट्री ली है ना तो कॉल को मत देखो, पुट को देखो, पुट में स्ट्रेंथ आई कि नहीं, अगर पुट में स्ट्रेंथ आ रही है तो कॉल डेफिनेटली वीक हो रहा है, राइट? बट कॉल देखते होगे ना तो एक इमोशंस अलग आते हैं कि ऊपर जाएगा, उससे अच्छा ऑपोजिट साइड का देखो, पुट साइड का। अभी भी स्पेस है, अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। और बड़ा मूवमेंट किया क्या? हाँ, अचानक प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? ओके, गुड प्रॉफिट्स। आई सॉ दैट, अपना ब्रोकर टर्मिनल यहाँ पे देखा, अचानक कितना प्रॉफिट कैसे हो गया? प्राइस वेंट अप, आई डिडंट सी दैट। ओके, गुड।
So hopefully today, as per plan, it will go. There is still space over here, 100%. Plus timing wise, we are at the perfect time. अभी हो सकता है आज मैंने जैसे बोला ना ये फुल डे का ट्रेड है तो ये हो सकता है यहाँ जाके फुल टाइम पास and then go. It is highly possible. Okay, but now our stop loss level is in a much safer place. Okay, target system में डालने का टाइम आ गया है. 281 is already come. Gap is already filled, so we can put the stop loss target in the system. I will keep it. Paid miss हो जाएगा. Good move. Very amazing move. Done. 300 का target hit. Woohoo. Okay. No open positions, just confirming. Open positions are left. Yes, all positions closed. Superb. अभी एक और अपॉर्चुनिटी एज आई सेड दिस इज अ फुल डे ट्रेड राइट तो यहाँ पे क्यों निकल गए क्योंकि नाउ आई विल एंटर अगेन आई एम गोइंग टू एंटर अगेन सो व्हाट एवर द एग्जिट प्राइस 300 पे आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड इफ एनी पुल बैक कम्स नाउ एनी पुल बैक ओके व्हेन विल इट कम आई विल टेल यू दैट ये अभी और ऊपर जाएगा इट कैन गो टिल योर 320 तक जा सकता है क्योंकि अपने को एग्जैक्ट हाई पे तो निकलने मिलेगा नहीं मैंने क्या बोला था फुल जर्नी का एक पार्ट अपने को मिलेगा कहाँ से कहाँ तक मिला अपने को वी गॉट द पार्ट फ्रॉम दिस वाज अवर एंट्री 204 here and this much part we got till 300, right? This is what we covered. This move we covered. Now it can go up further. Then this point it will go up further, come down again. यहाँ पे एक चांस और मिलेगा. अच्छा, by the way, अपना वो ट्रेड तो बाकी है निफ्टी वाला. Let's go to Nifty. Nifty 15 minutes. Has it given an entry? नहीं अभी यहाँ बाकी है. ये ट्रेड आएगा उसके बाद this will go up. There is still a lot of time, lot of space. Okay. So I will enter into this trade again. I'm just waiting for a chance now. It will give a chance somewhere little expensive. ऐसा नहीं कि सस्ता मिलेगा 300 पे एग्जिट किया है हो सकता है और थोड़ा महंगा मिले बट ऑलरेडी अ गुड ट्रेड हैज बीन टेकन लालच नहीं करना है आई विल वेट फॉर चांस एंड देन दैट ट्रेड आई कैन कीप फॉर फुल बिकॉज 184 का स्टॉप लॉस है नाउ दिस स्टॉप लॉस कैन बी मूव्ड ओवर हियर टू 25 let's see what price I get a chance. एक मिस्टेक में पहले बहुत करता था मैंने एक सक्सेसफुल ट्रेड लिया ना ये वाला के बाद मुझे इमीडिएटली उसी में डिप आएगा तो ट्रेड ले लेना तो मैं वापस लेता रहा ये सोच के कि अभी जाएगा तो वो होता ही नहीं था वो इट विल गो डाउन एंड देन इट विल गो अप फुल डे का ट्रेड है इट्स नॉट अ 1 hour 10 minutes ट्रेड राइट तो मतलब उसके पास टाइम है इधर तक जाके भी ऐसे आ सकता है आई डोंट नीड टू वरी आज का प्रॉफिट हो गया है वी आर इन गुड प्रॉफिट like more than 1%. So we don't need to panic. Resistance यहाँ पे तो है उसको. Let's see what it does. अच्छा, this is a good example. See, अजी मैंने एक चीज आपको बताई. I can see that on the chart. Okay, I'll show you. Same example. अब भी मैंने आपको सिखाया था कि there is a pattern where it tries to break this level. एक दो टाइम ऐसे, then falls. ये fall अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग है ना जा चुके हैं कि भाई इसके ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट होता है. It always falls. तो यहाँ पे एंट्री लेने से लोग डरेंगे. So whatever chance it gives over here is a good one because 15 minutes में already we are waiting for an entry.
ये वाला सॉरी. So I think it's a one-way market today, at least till 2 o'clock. जो भी put buyers है, they are in deep trouble, so they will be averaging their positions. अच्छा, पुट में एक चीज है, इट हैज कम टू द बॉटम, तो एक बाउंस थोड़ा तो बनता ही है, भले छोटा सा मिले बट थोड़ा बाउंस बनता है. इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू एंटर एनीथिंग, जस्ट एंजॉय डे एंड वॉच. 300 का 400 भी हो जाएगा, इट विल फील दैट आई मिस द एंटायर ट्रेड. अच्छा खासा बड़ा ट्रेड था, डजंट मैटर. यू मेक ए प्रॉफिट, यू एग्जिट, इनफ. वो भी एक्सपायरी के दिन जहाँ पे मैक्सिमम लोग लॉस करते, वहां पे भी हम मेड अ प्रॉफिट. Now what we can do is we can go a little safer. Instead of playing on expiry day, I will delete this thing now and I will go to the next week का. This one. ये ज़्यादा safe है. See, यहाँ पे break नहीं हुआ. You notice this one is still not broken. Is at that level only. ठीक है. भले expiry day वाले ने break कर दिया है. This one is not broken. So that means there is a chance कि यहाँ से fall नीचे आएगा. Fall मतलब temporary, छोटा सा fall, not a big one. ठीक है. बोला ना. It's just कि यहाँ से हिंट मिला नेक्स्ट वीक वाले में से कि ये ब्रेक नहीं कर पाए. इसके लंबा खिलाड़ी नहीं है. Will come down little bit. Wait. एल्गो ने कोई ट्रेड लिया क्या? एल्गो ने खाली सुबह को एक ट्रेड लिया था, दैट्स इट. आफ्टर दैट कोई नहीं लिया. अच्छा, लिया था अभी T2 से. ठीक है. Mostly. अगर अच्छा लगा आज का तो प्लीज पुट अ कमेंट, प्लीज गिव योर फीडबैक ऑन द कमेंट्स. वुड बी रियली हैप्पी टू सी इफ यू got to learn something today. This is one of the strategy, reversal strategy that I teach in the options class. There is a full day trade, so I will be entering again. Just waiting कब enter होना है. बहुत ऊपर जाएगा आज. आज तो I think it's going to be one-sided move, huge move. Okay? But planning के हिसाब से trade ले गए. All the levels have reached. So what I will expect is now, ये बहुत ही scary location है, right? It is at the VWAP level. यहाँ से भी fall आ सकता है. Plus यहाँ पे resistances है. Next week वाला, okay? Next week वाला. अब यहाँ पे indicators भी पहुंच गए सब ऊपर. मतलब दो चीज हो सकती है यहाँ से. One is this is the turning point, and यहाँ से market again falls down. Second is this is not the turning point, and what it will do is it will do a little fall only and again goes and break this level. If it does that, मतलब कि कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज अ वन साइडेड डे टू डे. कुछ भी हो जाए आज कॉल में ही पैसा है. तो because these have reached, I'm not going to take any chance. But after the fall, if it again goes up, तो normally होगा नहीं. See, whenever these levels reach, let me show you the past data. Never sub. ये देखो यहाँ पे. Whenever these levels reach at the top,
What has happened? Drop, fall, right? इसीलिए आई एम स्कैर्ड टू एंटर नाउ. आई वेट. अगर फॉल होके वापस ऊपर गया तो ये वन साइडेड मूव है टुडे, कंफर्म. बट फॉल होके और नीचे आ गया तो टाटा बाय बाय, वी आर डन फॉर द डे, totally done for the day. We'll see what it wants to do. It is not able to fall also. Let's see. 2-3 minutes and we'll come to know what is the conclusion. It should at least come till this super trend line, touch this line. It's on this particular one at around 330. Oh, look at this move. It's a one-sided day. And my confirmation comes when it breaks the super trend. See, after this is reached, एक टाइम सुपर मार्केट लेफ्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अभी 4 hours वो एक साइड भागेगा ना, वो नीचे आएगा. Let it come. And doesn't come still. I am happy. I've done more than one per. Day is closed. Target is met. चलो let's analyze Nifty C. अच्छा वो उसका क्या हुआ? 15-minute candle about to close. Then it is gone. Action lost. Hmm. हाँ, closing आ गया है. 15-minute candle closing has come. Entry is around 200. Right now available at 197. This is a 2-day trade. Maximum 2 days. हो सकता है आज आ जाए, कल आए, anytime. Maximum 2 days trade. Target is this black line going up and touching this red line. ये जब भी हो, 10%, 20%, 40% profit. Take a small trade, one lot if you want. Learning purpose के लिए, to understand how it works, you can take a paper trade. लिख लो कि प्राइस क्या अभी 196 है. I am taking a trade right now. Okay. Can it fall? It can fall all the way till 150. The stop loss is big. Don't take too much of risk. Keeping this in mind, you can take a trade if you want. Market is bullish. See, ये 400 जाके नीचे आ गया. Bank Nifty. Look at this. Went below the super trend. Now this is the test. This is the real test. If this is a one-sided day, अगर वन साइड मूवमेंट होने वाली है, इस लेवल को बैंक निफ्टी कॉल क्रॉस करेगा, तो आज फुल डे वन साइडेड मूव है. दिस कैन कम डाउन, टेस्ट इट टिल हियर, ऑलमोस्ट मिस्ड इट, एंड देन इफ इट गोज अप, दिस इज अ guaranteed one side. प्लस निफ्टी ने तो गारंटी दे दी है. लेट मी टेक दिस ट्रेड, और बातों ही बातों में ट्रेड मिस हो जाएगा. लेट मी फर्स्ट टेक माय ट्रेड.
Done. Trade is taken, and we will have to hold this trade for a long time. So we don't want to discuss this trade. Let it stay. जब उसका टाइम आएगा तभी डिस्कस करें. In the meantime, let's see what has happened to this Bank Nifty. I told you, it came down, ऊपर ट्रेंड ब्रेक किया, this line has come below. Now is the real test. अगर यहाँ से इस लेवल को क्रॉस कर दिया, हाई को, what is the high for today? 380. Oh, 380 level cross हो गया. So then one-sided move in Bank Nifty. Look at the chart of Bank Nifty. This entire thing of yesterday's high, यहाँ तक जा सकता है वो. 45,782 and 45,824. If it crosses this level, there is huge potential in the Bank Nifty side. Okay, but let it cross. That will confirm it. Why? Again, let me explain. Reason is simple. Once this reaches the top, wait for a super trend, close down, mark the highest point. If it has the guts, it can cross this, and then the sky is the limit. There will be crazy move because all of this is coming because of only one thing, that is short covering. Look at this. I'll show you the short covering in the market. Last 5 minutes. Go. All short covering there. Plus, look at the full day now. Full day में भी short covering start हो गई जो पहले नहीं थी. 1,40,000, all this. Big in the money. 1,300 last trading price वाले सब short covering कर रहे हैं. They are running for cover. Okay. Limit is at 45,800. The highest OI is at 45,800. Means कि हमने जो target यहाँ पे देखा है 45,700, 800, यहाँ पे highest है. इसके ऊपर they are not expecting. So all of them, what they are doing is they are shifting their false selling position from the loss to 45,800 level. यहाँ पे shift किया है सब. Next resistance level पे. So chances are high that this will happen. But it is not able to cross this level 380. Why? एक hint तो मिल गया है, it will cross. See, never I have seen a round number being the high of the day. Today's high is 380. ये 380 highest day का मतलब at the end of the day we will not see 380. मतलब 380 के ऊपर एक रुपया एक पैसा तो जाना ही चाहिए. तो ये ब्रेक तो करेगा, whether it will sustain or not is important. Because rarely you will see 380 as the high of the day. It in the middle of the day. Opening bell में हो जाए तो ठीक है. तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे, इस पिंक लाइन को टच करने आए के बाद जाए. It's okay. We need the confirmation. $74 lakhs. This is a question mark. Why is the total buy quantity so huge and very little sellers?
so less quantity, telling me crazy. Next week it is making sense, right? Clearly same. Hey, it's crossed, gone. Today is a one side day. Put put buyers have been totally vanished today from the market. We have entered into this trade. This breakout पे मैंने डाला था एक stop loss buy order. It's already executed. I'm going to stay in the rest of the day. Let it go whatever it does. Stop loss is very clear. 384. यहाँ पे 384. Entry has been taken at 400. Sorry, 380 पे डाला. Where is this? This is not the chart. हाँ, this is the chart. 380 पे entry लिया है. Stop loss is 347. Kept this thing. आज का profit is my stop loss and kept this trade. Okay. Is already taken the entry. Even the Nifty trade, which we took at 198, is at 212 right now. That's around 5% plus. But we have to wait. As I told you, we'll not check again and again. You have to wait for what? The target. Now, one-sided move itna ho jane ke baad, market will take a break. Okay. So fall can come. Don't panic. This is a full day trade now. Nifty, yes. Nifty, we took this 15-minute chart. Look at this. Beautiful. What is this pattern? What is this pattern? This is not a flag. Which pattern is this? It has broken out at that pattern. It has to close, so another 4 minutes to go. But if it closes out of this pattern, the distance, this distance, we can take. First, tell me what is this pattern? Wedge may both the lines have to be going down in the same direction, right? Here we are seeing the bottom is flat, so it's not a wedge. Yes, descending triangle. Triangle is descending in nature, and if you open that chart that I've given you, in a descending triangle, what are the opportunities on both sides? Because the trend was on the upside, it can take the prevailing trend also. We can take upside one also. And because the support is tested multiple times, if the support breaks, so see, now I have to think कि अगर मेरा ट्रेड प्लानिंग गलत है तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ा फॉल हो सकता है. Imagine this. Let me show you this. Is the descending triangle absolutely correct? सही आंसर दिया आपने. Let me show you this situation. अगर यहाँ पे false breakout हो गया ये, and it falls, it can falls very steeply, take out this support level and go down very fast all the way. Okay? तो इसीलिए हमने मंथ एंड का लिया है. अगर ये हो भी गया ना, because of this we are safe, we will get a chance, it will come up again. But intraday के लिए 1 minute chart में ये risk आ सकता है. This is a possibility. So yes, it's a breakout. We will take the trade. But in case if it fails, we have to understand कि दूसरी साइड पे बहुत बड़ा fall है. Keep the stop loss. Stop loss has to be kept. This trade is going amazing. This trade is going amazing. दोनों trade अभी profit में है. In the morning, we made first small loss trade, right? Then I did a small scalping, which I did not share with you guys. So scalping I cannot share. It's very fast. Then we took one trade, which was positive till 300. Then we took another trade right now in Banknifty also, and we have one trade in this also. Both are live. And we will stick to this trade because of one reason. Aaj put buyers में people are buying and buying and buying put. ये कब तक चलेगा, you know, this thing? Because on the put side, if you look at Banknifty put, ये तो सस्ता हो गया. Let's look at another one. Banknifty 40.
5,000. This one. It has been falling 1 minute chart like this. Today, this is today's data from here. Sorry, 230 say it has been falling. People must have bought at 190. Again fell, went up, so bought at 168. Again यहाँ पे buying किया होगा 138 पे. Again यहाँ पे buying किया होगा 76 पे. अभी तो इससे नीचे नहीं जा सकता. Right? Remember this thing I told you कि यहाँ पे हम लोग भी buying करते हैं. But today we saw on the other side, दोनों side नजर रखनी है. The other side पे market बहुत strong है. This will not work. So we did not take a trade. We did not take a trade over it. And it has fallen after that from 76 to 45. Right? So again it will come down. That time we will become alert. Till that time, let this thing go. We are making profit. Sorry, not this one. This one. We are in this trade. 380 पे buying था, 440 चल रहा है. And this one we bought at 198, 216 चल रहा है. What was the reason? 1140 के पहले, that breakout that I explained to you guys today in the morning, reversal trade. It happened before 1140. That's why it looked like a one side way. That's why we took one trade. Then the levels reached at the top where we were concerned कि वो level सब पहुंच गई है, हो सकता है trade fail होगा अभी, मतलब यहाँ पे reverse हो जाएगा. So after these levels came, we took a pause, we exited over here, waited for a fall. After that fall came again when it went up. This was the level we entered, and right now the trade is going on. Stop loss is over here. You can keep trailing the stop loss if you want. आपकी मर्जी. This is learning that we have done in the class, live example of it. Okay, this is for learning purpose, so that आप जाके खुद से आगे जाके trade ले सको. You don't need to be dependent on anyone else. You can learn and do this on your own. There are many permutation combinations. That's why we are in this live class. This will go on for months, and you can keep on watching till it becomes perfect for you. There will be lost trades also, right? But eventually we can be in good profit if we follow discipline. Discipline, patience, most important. कोई भी strategy use करो. Yes, fixed stop loss, especially expiry day के दिन तो fixed stop loss संदीप. Yes, absolutely correct. बहुत फास्ट फॉल आ सकता है अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो. ऐसे टाइम पे आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक. एक मिस्टेक मैंने की है पहले. ट्रेड इज इन प्रॉफिट, अच्छा चल रहा है, माय स्टॉप लॉस इज ओवर हियर, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. So what I used to do, I used to go for a small walk without keeping any stop loss in the system. अगर मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, for whatever reason, I have to first put a stop loss, then go away from the screen. क्योंकि कभी भी फॉल आके टोटली कोलैप्स हो सकता है. जैसे मैंने बताया ना, फॉल्स wedge का ब्रेकआउट इज अ फॉल्स one. Sorry, not wedge. The descending triangle breakout, if it's a false one, the fall will come very fast. If I'm gone for 5 minutes, 5 minutes के अंदर तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. Okay? So not to do that. We are in the trade, we'll stay in the trade, but stop loss, if you are not in front of the system, आप बाहर जाने वाले हो किसी वजह से 5-10 minutes के लिए, डोंट बी श्योर कि अच्छा इतना ऊपर है ना अभी तो कोई चांस नहीं है. ऐसी गलत फहमी में मत रहना. मैं रह चुका हूँ, मैंने मिस्टेक की है, एंड आई लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ दैट. बैंक निफ्टी की डेली कैंडल देख लेते हैं. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, आज क्या बन सकती है डेली कैंडल? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? अच्छा, कल का जो ओपन इक्वल टू हाई है, इस वजह से कभी बैंक निफ्टी ने पहले किया नहीं है. आई डोंट रिमेम्बर सीइंग अ पैटर्न लाइक दिस जहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई से फॉल हुआ एंड देन नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल फुल कवर कर लिया. लेट मी चेक. आई डोंट थिंक आई एवर सीन दिस. मतलब के रिस्क है, नीचे की बाजू फॉल हो सकता है. वील हैव टू कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज. All the time open equal to high, next day fully recovered.
I don't remember from my memory. यहाँ पे एक हुआ था open equal to high, next day closing was midway. But उसके अलावा in my memory this has not happened. तो ये थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग यहाँ पे दे सकता है, but fully recovering and closing above, highly unlikely. So that means the learning we are getting is daily time frame is telling us that be watchful, keep a strict stop loss. It's a one side move, but एक point पे after 2 p.m. या 1:30 p.m. it will reverse half of the movement. अभी के लिए जाने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, but half of the movement can be reversed. So if you have taken 2 lots by any mistake, ज़्यादा lot लिए है तो half lot you can book and keep so that आपका stop loss safe हो जाए तब. बस ऐसा पैटर्न पहले नहीं देखा मैंने. निफ्टी वाला ट्रेड चालू रहेगा बिकॉज इट इज स्टिल टुमारो डे आफ्टर टुमारो. बैंक निफ्टी में थोड़ा सावधान रहना. तो 380 पे लिया है ना, अभी 415 चल रहा है. इफ यू वांट यू कैन बुक 10% ऑलरेडी प्रॉफिट में है, बट इफ यू हैव मल्टीपल लॉट्स आई विल सजेस्ट टू एग्जिट हाफ द लॉट्स एंड कीप द रिमेनिंग हाफ, एकदम सिक्योर हो जाएगा. It will still go up. It's not that it's not going to go up, but trailing stop loss please रखना. So if I have to keep a trailing stop loss, okay, how will I keep it? Price has gone up like this. I will not keep over here. I will keep the trailing stop loss at this point. So as of now, the trailing stop loss will be at 352. थोड़ा ऊपर प्राइस चला गया तो it will shift directly to 410, but not now. Let it go up. Let it break this high. अगर ब्रेक किया तो शिफ्ट हो जाएगा. तो अभी भी लॉस का पॉसिबिलिटी है, जैसे कल हुआ था. There is a possibility of a 30-point loss. Once it crosses above, we shift the stop loss over here, then we are in the safe zone. 380 पे लिया है, 410 is our stop loss, trailing stop loss, बढ़िया हो जाएगा. Let's wait for it. मैं सोच रहा था कि इस लाइव स्ट्रीम में आई विल टेक स्टॉक्स आल्सो, कमोडिटीज, करेंसी, बट निफ्टी बैंक निफ्टी itself is much on a 1 minute time frame. I don't think वो possibility होगी. Let's see. Once I get used to this, then we will improvise. This is the third day, so slowly and steadily.
Internet is lagging. I'll be back in 2 minutes. Don't worry, the fall that is coming is only this black line coming down. Sorry, get the wrong screen. This black line coming down, that is the only thing. And it might come to touch this pink line. In a very trending market, normally this pink line is not broken. It will come, touch, spend some time, and then go up. So not to worry, the trend is still secure. Okay? Our stop loss we have put down over here, that is also secure, 350 levels. So nothing to worry, just watch it. Don't let any emotions aayege, don't let them panic. If you're not taken a trade, don't go into FOMO. Don't try to jump into a trade. Watch it today. देखो कैसे इमोशंस आते हैं आपको अज्यूम करो कि आपने ट्रेड लिया हुआ है आपने बहुत बड़ा पैसा लगाया है वॉच हाउ द इमोशंस आर कमिंग दैट वे यू विल लर्न 380 का ब्रेकआउट किया था 380 पे आके उसने रीटेस्ट किया है इज द पुल बैक रीटेस्ट हो सकता है और थोड़ा नीचे आए 368 तक ब्रेकआउट कैंडल प्रीवियस कैंडल लो जहां पे अपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो अभी सेफ है इफ इट गेट्स ब्रोकन वी विल एग्जिट चले तभी हमारा खाली निफ्टी का ट्रेड चालू रहेगा पोजिशनली द ब्लैक लाइन हैज कम डाउन जो 15 मिनट में हमने निफ्टी में ट्रेड लिया वही सेम ट्रेड सेम पैटर्न 1 मिनट में बन रही है इफ यू सी ओवर हियर अगर ब्लैक लाइन नीचे आ जाती है रेड लाइन ऊपर ही है दिस विल फॉर्म अनदर चांस एंड ओवर हियर इट विल डू समथिंग लाइक दिस इज आवर एंटिसिपेशन गलत हो गया तो विल एग्जिट बट चांसेस आर वेरी हाई वेरी हाई okay I'll just be back in 2 minutes yeah
Okay. Did the market go anywhere? Nowhere. वही का वही है. ठीक है. Let's check. मार्केट एकदम पॉज स्टेट में चला गया है. अगर हम देखें, वी टुक अवर फर्स्ट ट्रेड. पहला ट्रेड हमने सुबह को आज यहाँ पे लिया सी में. सुबह से हमको आइडिया था कि आज सी में चांस है. क्यों? क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वी वर वेरी क्लियर ऑन निफ्टी. लेट मी शो दैट अगेन. 15 minutes on Nifty, we saw this pattern. This is my setup. जब भी ये सेटअप मार्केट में क्रिएट होता है, red line above and black line has come at the bottom. This is the bottom zero level. जब भी ये सेटअप फॉर्म होता है, there is a good chance to buy. So we wait for super trend. हमने super trend के लिए वेट किया. यहाँ पे जाके super trend क्लोज हुआ है and the price has started going up. This is a longer trade. This will take some time, 1 or 2 days to complete, right? इससे हमको एक आइडिया आ गया था कि आज हमको कॉल साइड पे जाना है. जितना भी मार्केट नीचे आए, we don't have to panic. We are going to find an opportunity on the call side. इसके बाद हमने बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो हमने बैंक निफ्टी के ट्रेड्स देखे. दिस वाज द ट्रेड वी लुक्ड एट ऑन अ 1 minute चार्ट. सेम सेटअप अभी वापस डेवलप हो रहा है ऑन अ 1 minute चार्ट. लुक एट दिस. व्हिच इज व्हाट मार्केट इज डूइंग, इज नथिंग बट गोइंग साइडवेज. ये क्यों होता है मार्केट में? प्राइस मूवमेंट, टाइम मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट, टाइम मूवमेंट, राइट. एंड सेकेंड रीजन इज, अगर आप देखो पुट साइड पे, कौन सा पुट लेके, लेट्स सी. अब कितना सस्ता हो गया. दिस वाज एट अराउंड 60 रुपीज था, 20 हो गया. लेट मी ओपन अनदर पुट. हाँ, ये हमने खोला है ना. Why it does this is, it is giving hope. It is giving hope to people who are trapped over here. जिनका फंसा हुआ है माल, उनको होप दे रहा है कि ऊपर जाएगा. See this green candles. It is giving them hope. ये होप कब डेमोलिश होगा, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ. What will happen is, the price will go all the way till this red line, this pink line. यहाँ तक जाएगा and then collapse. On the other hand, on the call side, what it will do is, price will go all the way till this red line. यहाँ पे आया है, उसने sideways किया and see now it is going up. This is nothing but creating hope. Now our stop loss will shift. जो चीज हमने यहाँ पे बाय की 380 पे, we bought at 380, right? अभी हमारा stop loss था 350. Now because the market has gone up, it will have a trailing stop loss, and I will shift the stop loss all the way in the profit zone. ये stop loss निकल जाएगा. Now this is our new stop loss, which is at 380. This is level 382. Cost to cost. Now we are in the safe zone. We bought at 380. Price is at 450. We are keeping our stop loss over here very deep at the cost price. मतलब loss होने का chance ही नहीं आज. But right now, if you want to exit, you are at 70 points in profit.
that is equal to almost 16%. Yeah, 15 to 16% in profit in a span of just last 40 minutes. But as I told you initially, we will never put all the money. भले 10% हो 20% प्रॉफिट हो, कभी भी लालच में आके सब पैसा नहीं लगाना है. आई मेड दिस मिस्टेक्स इन द पास्ट. ये मिस्टेक से आपका टोटल लॉस हो सकता है. Put a very small portion of it, get 10-15% of it, which should be equal to 1% of your total capital. टोटल कैपिटल का 1% हो गया दिन का, दैट इज मोर देन इनफ. कोई दूसरा बिजनेस आपको ये बना के नहीं देगा. राइट, सो दिस इज अगेन फॉर लर्निंग पर्पस ओनली. प्लीज डोंट टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस. दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, so that once you learn, you can start making money on your own. You are not dependent on anyone else. 382 is our stop loss level. Closing below that, we will exit. It is giving hopes to the put buyers. It is giving hope to the put buyers. But we know 1 minute time frame may look at this. Red line is below, black line has gone up. It's just a hopeful trade. This is not going to do anything. Jitna bhi upar jaye put, I'm not scared. Okay, I'll show the call. This is a perfect setup. There is little space. पूरा space है, चलेगा. ये देखो यहाँ पे थोड़ा space है, ऊपर जाके नीचे ऐसा आएगा. This is ideal support, ideal level. तो अगर नीचे आता है तो अच्छी बात है. Let it come down, make this setup complete, and then it will pick up. So nothing to panic at all with what trade we are into right now. Okay. वो wedge जो हमने देखा था, wedge was on which time frame? I think 15-minute time frame. यहाँ पे flag है. ये वाला. ये wedge में से breakout हो चुका है. It is formation of a wedge. Sorry, wedge. संदीप ने मेरे मुंह में wedge लगा दिया है. Descending triangle. There was a breakout. There is no false breakout signature. The price is going up. Target is this much on the upside. That means you can expect over here 200 and what is this level? $200, 240, 260. जो हमने 198 पे लिया है वो मैं 260 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नॉट टुडे. दिस वन कैन कम टुमारो बिकॉज ये 15-minute टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम. थैंक यू डांस बडीज फॉर लाइफ. थैंक यू. तो पहला सेटअप हमने देखा था 15 मिनट्स वाला सुबह से, that has started to work, is going up. Okay, as I told you, the target is when this black line touches the red line, this is our target. अभी तो बहुत टाइम है इसको. Let's look at the 1 minute. See, as expected, this black line has little space on the side. It will come down. Let it come. This is the place where market आपको panic में डालने की try करेगा. One big candle will come, 10-20 points. You will get panic. You will try to go in the opposite direction. Plus, it will give hopes to all the put buyers. एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, अभी जाएगा ऊपर, लेट मी बाय मोर. तो जिन्होंने सुबह से एवरेज किया है 200 पे, 200, 150, 100 पे, and they're still buying, they will get some hope, but that is not long lasting. Our setup is clear. This is not long lasting. It's a clear setup of a bullish market. Okay, this is a very good setup of a bullish market, but we always have to have a stop loss. अपना stop loss कहाँ पे है? At the cost price, right? Any closing below that, we will exit. 380 पे हमने बाई किया है, उसके नीचे क्लोजिंग आ गया अगर कैंडल का, we'll exit. As of now, though, without need for exit, it is giving us a clear sign. This thing is going to go up. Beautiful day, trending market day is the best day to make money.
बाकी के दिन आप बोर हो जाओगे. I will also have nothing to speak, right? These are the days we wait for. Beautiful day. I told you the big picture. On the daily time frame, this kind of pattern I have never seen happening before. Okay, I showed you in the past also, ऐसे pattern नहीं बनती है ज़्यादा. यहाँ पे एक था open equal to high and then this. So we are not expecting the price to go all the way up and break this. 45,800. 45,800 is the level. Hello. स्टॉक मार्केट में नंबर्स इतने इजीली लीक हो जाते हैं. एवरी सिंगल डे कॉल्स कम. तो आप ट्रेडिंग करते हो. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द डेली चार्ट. 45,800 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है. इस लेवल के ऊपर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो. एज पर द कैंडल्स ऑल्सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आज ऊपर जा सके. So slowly and steadily, let's look at 15 minutes. Slowly and steadily, market will inch towards this level. It will spend some time because उसके पास अभी 3 घंटे बाकी है. There is enough time. It will not go. हमने ये ट्रेड कैप्चर कर लिया, right? The next trade can be a little slow and last में एक अच्छा बड़ा ट्रेड आ सकता है. So patience रखिए, stop loss रखिए. Not need to worry about anything. As of now, it is totally in control. They are giving chance. Option chain में देख लेते एक time. Option chain full day. There is short covering. नेक्स्ट वीक का ऑप्शन चेन देख लेते हैं. नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है. इवन नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन में देयर इज शॉर्ट कवरिंग. दिस इज अमेजिंग. सी टुडे इट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज दे आर रनिंग फॉर कवर. बट इवन नेक्स्ट वीक के जो सेलर्स है, कॉल सेलर्स, दे आर पैनिकिंग एंड दे हैव स्टार्टेड बाइंग बैक द कॉल्स. दिस इज एन अमेजिंग सिग्नल कि मार्केट बुलिश है. कल जो मार्केट ने मूवमेंट किया, कल जो बड़ा सा फॉल आया मार्केट में, ये जो फॉल था, इट वाज जस्ट टू क्रिएट पैनिक. जो मेरे स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि वी ऑलवेज लुक एट दिस इन अ 5 waves. 1 2 3 4 5 complete. Now it is again cutting out. So be patient, give it time, it will give you good results. See, this has come down. Black line has come down. Super trend अगर क्रॉस हो गया ये नेक्स्ट कैंडल में, आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड. Yes, super trend is also crossed. So in the next couple of minutes we will see the movement come. Couple of minutes. 12 o'clock हुआ है, 12:10 तक. But before 12:10 we should see this level being crossed out. Guys movement, time movement is done. One small tip. I'm not expecting a big move now. अभी वो step by step जाएगा. Okay, this kind of move will not come now. It will be step by step move. Means it will go like this. Big move has come. Now it will do this sideways. जो अभी हो गया उसका. It will go up and make a little higher high. Again do sideways. Again little higher high. Do sideways. And then finally do the last one. अपना Bank Nifty 45,800 तक जा सकता है. This is an anticipation, but we always do anticipation with fixed stop loss, which is right now at our cost price. So that कुछ भी हो जाए, today we will not take any loss. We already made one profit trade. Second trade में we will not take loss. We will have a second also profitable. But अगर something else happens as per our anticipation, it doesn't go, then we will not take a loss trade. We are at cost to cost. अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए and please share with your friends. Subscribe.
क्या लगता है? As I said, 12:10 के पहले the movement should come. It's 12:08 right now, and its sideways is over. It's ready to take the next level. Let's see. Nifty 15 minutes, the one that we took at 198. अभी उसकी value है 223. Already 25 points up, so 10% up in just last 1 hour, 1.5 hour. Perfect timing to enter. We waited for the super trend for almost 1 hour. We waited 1.5 hour. कि जब तक सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा हम एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी कि वो नीचे येलो लाइन तक आ जाए, उसके बाद हो. वी कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली, राइट? So we have to wait for the market to give us the signal. हमने वही किया. बैंक निफ्टी 1 minute chart, same thing. Look at this. How's the timing? This is what you get to learn. This is how you have to learn. Make a setup. उसको whatever setup you have, this is my setup I've done since the last 2-3 years along with another guy, Mr. Bhavesh Bhai. Worked very hard on this. But finally, once you have something, you have to go deep into it. हम क्या मिस्टेक करते हैं जो मैंने 2015 में बहुत किया था. आई यूज्ड टू कीप चेंजिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर स्ट्रेटेजी. एक स्ट्रेटेजी नहीं चली तो दूसरी स्ट्रेटेजी, वो नहीं चली तीसरी, चौथी. I used to keep changing strategies, and that doesn't work because every strategy has failures. वो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना है. एक स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा. अगर आप सोचोगे कि कभी स्टॉप लॉस नहीं होगा तो that's not possible. See, the movement has come exactly at 2:10, 12:10. I told you the movement will come. Why? Because it has given me the setup. I've seen this setup thousands of times. I have seen every single day call charts, put charts, why it doesn't work, why it works. इसमें PhD कर दिया है. So the results are all stored over here. And your mind will tell you when you see a pattern कि ये पहले मैंने देखा है, उस टाइम पे ऐसा हुआ था. This is what can happen. This is how you develop. It is not an overnight thing. People think that 2 days class कर दिया मैंने, I will learn about stock market, I will make money. ऐसा नहीं होता है. Right? You have to give your time, understand it, watch it, then it will start giving you. And that's why, because it's going to take time, you need to have patience. You keep small stop loss initially because you are learning. ढाई मत करो, पैसा आएगा, but पहले initially slow करो. See the movement. 12:10 बोला था and market went up.
Isn't it beautiful? अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट कर दो guys. Exactly live I gave you when it will go up, and the market has gone up exactly as we planned, because this is what it does every single time, with some lost trades also. Okay, this is for learning purpose. Please don't consider this as any tips. This is for learning. सीखो क्या हो रहा है. This is available every day. आप रोज ज्वाइन कर सकते हो. आपको ये रेड लाइन ब्लैक लाइन एवरीडे दिखेगी. आपको अभी सेटअप पता है, आप खुद से ट्रेड ले सकते हो. You don't need me, but you come live, you can see the setup and you can use it. Okay. Now, as I said, यहाँ पे वो sideways हो जाएगा थोड़ा नई लेवल पे जाके. So it will take some time. अभी मार्केट फास्ट ऊपर नहीं जाने वाला. Look at the put side. Put side वालों की क्या हालत है. मैंने क्या बोला था? It will come sideways. As soon as it comes over here to the red line, it will now start falling down. क्या किया उसने? The reason why it did this is nothing, but it is called as time movement. टाइम मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए. जब भी प्राइस मूवमेंट होती है तो मार्केट देन टेक सम टाइम आउट. थक जाता है मार्केट, एग्जॉस्ट हो जाता है. सो इट टेक सम टाइम, एंड आफ्टर द टाइम इज डन इट विल अगेन स्टार्ट इट्स मूवमेंट. ऊपर की तरफ और 100 पॉइंट्स का स्पेस है. 45,800 is the biggest level. 700 पे obviously resistance आएगा, but 800 is the biggest level to be watchful of. Okay, one more thing. ये जब भी वन साइडेड मूवमेंट मार्केट में आता है ना, अराउंड 130 से 230 के बीच में यू हैव टू गेट कॉशियस. आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम टाइट कर लो, बिकॉज द मार्केट माइट नॉट क्लोज एट द डेज हाई. तो लास्ट का जो 1.5 hour 2 hours है, it can reverse a little bit. It will give the chance to the sellers to come in, take the market a little down, and then continue the next day, right? So it's possible it can happen. So we have to be careful. What we will do is we will start trailing our stop loss, जो हमने already किया है. पहले हमारा stop loss था यहाँ पे 350 पे. This was our stop loss. Then now we have trailed it to our cost price 280. Now it is up. So once it goes up a little bit, we'll start trailing it at this level. अभी नहीं, अभी नहीं. अभी उसको थोड़ा time लगेगा. Once it goes up, then we'll trail it over here. Okay? We are right now in no profit, no loss zone. अगर नीचे आ भी गया तो लॉस नहीं होगा. अगर आपको डर लगता है, आप नए हो, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो. आपको ऑलरेडी 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, which is 16%. Okay, so it's okay. You exit and then you just watch what is happening. अगर नीचे आके यहाँ हिट हो गया तो आपको खुशी होगी कि चलो मैं अच्छे में निकल गया. अगर ऊपर चला गया तो आपको गम होगा. Market is always going to give you that. You have to play per strategy, not play as per emotions. Emotions को साइड पे रखना है, as per strategy करना है. Some day you will be extremely profitable, some day you will have no profit, no loss. Some days you will take losses also, right? Monday when we took the trade, we exited with 1% of total capital profit. Tuesday we took a trade, we had 4 trades, out of that 3 trades were lost trades and 1 profitable trade. We exited with minus 0.5% of the total capital. Today we are already 1.5% plus of the total capital, and this is the next trade. So let's see how much we can get today.
We'll take a look at the higher time frame, 15 minutes on the Bank Nifty chart. आज expiry day है ना, so that's the reason why it's doing this. Nothing has broken from a structure point of view. Structure अभी भी intact है. There is nothing in the structure that is showing any kind of fear coming in. It can fall till this level also, but still the structure is intact. ये जो बड़ी कैंडल बनी है, buyers ने बनाई है, ये कैंडल, if those of you who are my students from level 2, you know what this is. I just spoke about it in the last class. क्यों ये कैंडल बनी, इसका सिग्नेचर अपने को पहले ही मिल गया था. In today's class, we are going to learn about option basic, what is called put everything in the evening, today evening at 9 o'clock. So on a 15-minute time frame, nothing has changed. Everything is still the same. If too many peoples are on the call side, समझो पुट में कोई फंसा हुआ नहीं है, कॉल में सब लोग हैं, तो मार्केट क्या कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है. What it will do is it will come down and fall fast to the yellow line. तो काफी लोग डर के निकल जाएंगे, right? Second option it has is all the way till the VWAP, जो आज पॉसिबल नहीं लग रहा है. अगर आना है तो आफ्टर 2 o'clock होगा, अभी नहीं होगा. It can create this kind of a situation. क्योंकि कल उसको ऊपर जाना है अगर, तो आज उसको घाई नहीं है मार्केट से. इसके लेट मी टेक आउट ऑल द वीक प्लेयर्स, जो भी कच्चे नींबू है उनको निकाल देता हूं मैं मार्केट से, एंड देन आई विल गो अप. तो इट इज अ गेम ऑफ इमोशंस. ना अब इमोशंस कंट्रोल में होगा, आप सक्सेसफुल होगे. And in 2015, when I made my losses, I was totally not in control of my emotions. Totally not in control. I had a good strategy, everything was perfect. I had money also, capital also, everything. But I did not have control on the emotions. It took me ages, 15, 16, 17, 18, 3 saal lag gaye just to come out of that state where I can be in little control of the emotions that comes when the market fluctuates like this intraday. So it takes time. Don't be harsh on yourself. थोड़ा टाइम लगता है, but you will come across. Yes, Kanmani, we learned that pattern. Great, good. Live example, right?
So you might be thinking market kahin nahi ja raha hai, it is sideways. But to be very frank, it is giving you amazing opportunity. What is it? It is giving you peace of mind. हमने यहाँ पे stop loss रखा. Initially वो stop loss pink line पे था, right? Now if you see slowly the yellow line is coming up. अपना stop loss वहीं पे है, but now the yellow line has become the stop loss. And yellow line is another layer of support. अगर pink break हो गया तो yellow supports the market. उसके बाद कुछ नहीं है, सीधा fall है till this line. So we have that extra support now to give that confidence. If it has made two bottoms like this, it's possible it can make one more. Possible. I'll show you an example of this. Let me show you an example. I think हमने कल ही देखा था ना, कल कुछ साइड पे देखा था, I think कुछ साइड. निफ्टी के चार्ट में था. निफ्टी में कॉल साइड पे. 12 September 10:54. There it is. This is what I was looking for. अगर आप इस पैटर्न को देखो, नीचे आ गया था, रेड लाइन ऊपर है, उसने एक अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट किया, उसके बाद वो ऊपर गया. If you had taken over here, it did give you panic over here, and then finally it went into profit. तो ये पैटर्न के वेरिएशंस बहुत है, and that's why I'm doing this live is अगर एक सिंगल पैटर्न आप सिखा रहे हो, it is not that वो always exactly वैसा ही बनेगा. It has many variations, and that variations आपको तब समझ में आएगी जब आप उसमें PhD करो. इसलिए कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप काम करो, give it time, watch it every single day, what are the different things it does, how it behaves in different market scenarios, then you'll be able to make a complicated strategy, but it is covering all different scenarios, permutation combinations. बहुत लोग मार्केट में आते कहते हैं बहुत सिंपल है, ऐसा कर लो हो जाएगा, पैसा बन जाएगा. वैसा नहीं है. Any strategy, I've seen so many strategies in the last 20 years. Okay, I'm very active since the last 10 years, full time. तो मैंने बहुत strategies पे back testing किया है. Every single strategy has its own permutation combination. आप अलग अलग स्ट्रेटेजी में शिफ्ट होने की जगह पे किसी भी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के उसमें डीप जाओ, उसमें PhD कर दो. Stop loss line exactly at yellow line. Perfect. Beautiful. And market has gone up from here, which is a good news for us. Why is the horizontal line not coming? अच्छा, हाइट ठीक है. अभी भी किसी को फियर है तो you can exit, you can book your profit. You are in good profit right now. 55, almost 70 points, right? It's a good profit. अगर fear feel हो रहा है तो you can exit. We are going on a structure of trailing stop loss. And market will fall to the yellow line once today. आज एक टाइम तो वो येलो लाइन पे आएगा, कोई जाने के बाद या अभी आएगा, आई डोंट नो.
नाउ व्हेन यू गो बैक एंड सी, इस सुबह हमने क्या डिस्कस किया था, ये लेवल पे ब्रेकआउट लिया था हमने, एंट्री ली थी, ये गैप फिल होगा, दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 300 पे. लुक एट वेयर द मार्केट इज गॉन, टोटली बियॉन्ड इट, राइट. जिस दिन ट्रेंडिंग में हुआ ना, दैट इज द डे टू मेक मनी. अर्लियर एक और चीज होती थी मेरे साथ, अगर मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे हमने आज लिया 300 पे, मैं निकल गया हूँ, समझो मैंने प्रॉफिट इतना किया था, उसके बाद टू एंटर अगेन एट 380, इम्पॉसिबल. माई माइंड विल नॉट अलाउ ओनली. कैसे मैं इतने महंगे पे ले सकता हूँ, मैंने 300 पे बेचा है, पूरा नीचे आएगा ना, जब उसके नीचे सस्ते में मिलेगा तो ही मैं लूंगा. ये साइकोलॉजी से निकलने को मुझे बहुत टाइम लगा. मैं एंटर ही नहीं हो पाता रहा, माई बॉडी एंड माई माइंड कुड नॉट जस्ट टेक दैट ट्रेड जस्ट बिकॉज वो महंगा है. मैं निकलने के बाद वो महंगे में मैंने लिया इसको. पर आज बहुत कन्वीनियंटली हो जाता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम to change the psychology, the emotions that come in, but it can be changed. See, Ramu came. Patience. 380 वाला ट्रेड 480 पे है, 100 points in the positive, without any fear, just watching and observing it. If you want, you can book that trade, because one thing that I see over here is कि अभी इसकी स्पीड इसके बाद स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसने एक ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, वो तो राइजिंग चैनल, थोड़ा इसमें चांसेस है नीचे आने का. So all we will do is we will now keep our profit safe. We will make our profit safe. We will keep this as the new stop loss. What is the new stop loss? 420. 420 will be our new stop loss. So we will keep ourselves. So कुछ भी हो जाए, we are going to exit in profit. 35 points, which is around 9%. Abhi already we are in 25%. So if you want, you can book it. But I'm keeping it because my target is 45,800 तक बैंक निफ्टी का स्कोप है. एटलीस्ट 750 तक तो जाएगा. Okay, and 750 means on the chart 450. Okay, ये उसका क्लोजिंग यहाँ तक तो आना चाहिए, और इट्स ऑलरेडी अबव इट. दैट्स फेयर इनफ. एक चीज अच्छी है, लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से, आई एम नॉट ओपनिंग माई पीएनएल स्टेटमेंट. नॉर्मली क्या होता है ना हम लोग के साथ, दिस इज अनदर पॉइंट, continuously looking at profit and loss, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना, that brings emotions. Now because I'm with you guys, thanks to you guys, मैं अपना पीएनएल देख ही नहीं रहा हूँ. What is my profit, what is my loss, I'm not seeing. बीच बीच में कभी देखता हूँ, but लाइव मार्केट में while talking to you, I'm not seeing it. तो उससे एक फायदा है कि I'm not booking early, I'm not concerned about the emotions coming, because I'm not seeing it only. मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ. Thanks to all of you. Stop loss is 420 लेवल से ना, आई थिंक वो निफ्टी का ट्रेड का क्या सीन है. लेट्स लुक एट द निफ्टी ट्रेड.
निफ्टी ट्रेड इज एट 236 जो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया एट 198 लाइव यहाँ पर that trade is at 235 now 235 236 what does this say there is still space मैंने बोला ना आपको ब्लैक लाइन एंड रेड लाइन टच होगी जो आज भी हो सकती है कल भी हो सकता है वॉट एवर इट इज एंड प्लीज अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज अभी इतना प्राइस हो गया राइट और इतना स्पेस बाकी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको और मिलेगा हो सकता है ऐसा जाए comes down and when it touches यही प्राइस हो we don't know and it can be more also less also so I don't go by that I'll wait patiently let it touch whatever the price is 10% profit 20% profit 5% profit no profit no loss whatever it is I will exit तो हो सकता है मुझे यही मिले कल भी लेकिन it's also possible there can be a big gap up so we'll just I'm just explaining you my setup you can create your own but this is how I am doing it where are we right now 474 now same setup that I'm just been showing you, the red line and the black line. This is my favorite one, by the way. There are many setups. This is my favorite one. And the other one is the reversal one, which we just took in the morning, which was also super successful. I told you we should wait till the end of the day. But there is this fear inside me. I will openly share with you guys. Because this is the first experience of going live like this, trading live. There are certain fears that I don't want people who are following or watching, उनका कुछ loss होना चाहिए. So I'm being very cautious, overly cautious, and trying to do things a little differently, which might go in my favor, which might not go in my favor. But वो एक है कि I don't want anybody else to blindly follow, copy the trades, and then end up taking big quantity. क्या होता है ना, when you get two successful trades, suddenly you will feel very confident that let me follow this guy and take big quantity and I will become overnight successful. तो ये मैं कर चुका हूँ. मैं जिनके पास सीखा था अच्छे ट्रेड्स देते थे, अच्छा सिखाते थे, तो 2-3 ट्रेड सक्सेस गए, वो ट्रेड में वो लालच आ जाती थी. आई विल पुट 3 times 4 times the money and then unfortunately that trade will go in loss and I will lose a lot of money. So I can't blame him because he has already told me कि सक्सेस रेशियो 100 तो है ही नहीं, पर वो जो लालच आ जाती है ना, दैट इज द प्रॉब्लम. तो आई रियली विश एंड होप आप लोग उस सेम मिस्टेक मत करना. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज फेलियर ट्रेड्स आएंगे. एंड आपने देखे, आप कल का वीडियो खोल के देख लो, सी yesterday's video so that it is a reminder to you that failure trades also come. We have to just make sure that the failure is not big. It doesn't take away big capital.
495, 496. Will it hit 500? 500 is a round number. Let's look at the sellers over there. कितने sellers है 500 पे? ये अभी भी समझ में नहीं आया. 66 lakh buyers and only 51,000 sellers. What kind of short covering is this, yaar? My goodness. Nobody is willing to sell. आया राउंड नंबर से आया 500.55. वहां से रेजिस्टेंस आया. ठीक है. We are way below the yellow line. No, we have changed it. Our stop loss is now. Is our stop loss? Oh, look at that fall from 500 number. That means 45,800. Perfect. हमारा एक्सपेक्टेशन सही है. ये जो ओके जिनको कॉल पुट पता नहीं है, दिस माइट गो लिटिल ओवर द हेड. इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये कॉल की जब अगर मार्केट 45,800 जाएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 500 होगी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो मतलब कि इसको 500 के ऊपर जाने में इंटरेस्ट है ही नहीं. तो आई विल पुट ऑर्डर टू एग्जिट. अभी तो नीचे आ गया है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी नीचे आएगा, टाइम पास करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा. सो आई मिस द अपॉर्चुनिटी. आई शुड हैव थॉट ऑफ दिस बिफोर, बट अभी ठीक है, मिस हो गया. Where are we going to keep our stop loss? 1, 2, third attempt can come. The third time also this can come down, but the good news is red line has not come down. The red line has not come down. Tab tak ke liye we are safe. Put Nifty maybe, even though it has fallen, no issues. We have bought at 198. We are safe. We have bought it all the way down over here, below the VWAP. बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिला है अपने को निफ्टी. It's a 15-minute trade. No need to hurry and come out of it. Okay. अब सेकंड चांस में निकलना पड़ेगा. ये पहले स्ट्राइक नहीं हुआ. What I'm saying is इसका रेजिस्टेंस 500 पे आएगा. बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा. क्यों? क्योंकि 45,800 पे रेजिस्टेंस है. And if you see the difference, 45,800 minus 45,300, 500 पॉइंट होता है. इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज 500 है. 500 के ऊपर तो जाना ही नहीं देगा इसको. ये 500 के ऊपर नहीं जा सकता है वाला. इनफैक्ट ये काफी नीचे आएगा, फिर जाके 450 पे क्लोज होगा या तो 500 पे क्लोज होगा. टाइम वाइज वी आर स्टिल सेफ. 1240 इज नथिंग. वी हैव स्टिल स्पेस. ये ब्लैक लाइन और एक पॉइंट नीचे आएगी थर्ड टाइम. दिस इज ऑल्सो कमिंग डाउन. फाइन. ये पैनिक फॉल है. अभी होने दो, और 2-3 कैंडल होगी तो अच्छी बात है. Those who want to exit, they can exit. Book your profit. I am going to stay in this trade. And this is the third bottom. Black line ka third bottom. Nice panic created. 1, 2, 3. Now just to be sure, put एक टाइम देख लेंगे. Put में कुछ बड़ा बाइंग आ गया अगर तो प्रॉब्लम. See nothing. Those who are stuck in the put, they are just not able to take the price up. 31 से 38 तक ही जा पा रहा है. Let's look at another put. ये तो सस्ता हो गया अभी. By 8. When this becomes 0, that's the question. 1, 2, third attempt. It can maximum go till 150, 149, 150. उसके ऊपर गया अगर ये पुट तो फुल रिवर्सल. टुडे द एंटायर कॉल का जो प्रॉफिट है पूरा रिवर्स हो सकता है. अगर ये 144 के ऊपर गया तो यहाँ पे नजर रखो. कीप एन आई ऑन दिस. ये नहीं जाना चाहिए ऊपर. कॉल ऊपर जाए नहीं जाए चलेगा. ये नहीं जाना चाहिए ऊपर. अगर ये चला गया तो ये तो डेफिनेटली लॉस में जाएगा. तो विल कीप एन आई ओवर हियर. विल लुक एट द पुट चार्ट फॉर सम टाइम. एंड मैंने अभी सिस्टम में डाल दिया है. लेट मी टेल यू, आई पुट स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट एट 480. 480 पे आएगा तो आई विल एग्जिट बिकॉज 500 के ऊपर जाने की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है और मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है कि एग्जैक्ट टॉप पे निकलना है. 480 मिला चलेगा. okay? जो लोग निकल चुके हैं प्रॉफिट में, गुड. जो लोग है, आई एम गोइंग टू एग्जिट एट 480 एंड माई आईज विल बी ऑन दिस पुट 45,800. This should not go beyond 144, 150 levels.
especially this VWAP 170. If that happens, total reversal in the market can come. But little confidence है क्योंकि 15-minute time frame में there is another support, अपने support में है, तो tension नहीं. See, it is going up, 479 आएगा तो I am really out. 469. ट्रिपल बॉटम बन चुका है, अभी भी स्कोप है मार्केट में. Now what I will do is now I will exit at 479 and only if it goes above 510 तो मैं वापस से एक थर्ड ट्रेड लूंगा. अभी के लिए I will book this profit at 479 but 475 आ गया है. My order is in the system, just waiting for execution. Okay, what I'm saying is 510. Next entry I will take only if it goes above 510. क्योंकि अभी इसमें it's kind of getting tired, this guy. So maybe it will go, maybe it will not, we don't know. But the trend line is getting followed very nicely. It's possible कि वो 510 तक जाए, उसको ब्रेक किया तो ही we will consider going long again. क्या हुआ? कितनी हुआ टारगेट? Oh, missed it by just 2 points. ठीक है, it will go. कोई टेंशन नहीं. क्योंकि ये बात समझ में नहीं आई, 66 लाख बायर्स कैसे है इसमें? 45,500. Let's check something else. 45,600. 1 crore 64 lakh buyers and only 4 lakh sellers. Going on here. ना short covering है क्या ये? Extraordinary. All the short covering in the last 15 minutes is not there. In fact, it is happening on the put side. That's was there. Things are changing. Maybe I think for next 1 hour till 2 o'clock, it can go sideways now. Okay, till 2 o'clock, no movement might come. 132. So we have another 45 minutes. If you want to take a lunch break, अगर आप trade में नहीं हो, you can take a break. 479 पे I will exit. If you have any friends who is doing options trading, you can invite them to come here, learn online. Main objective is to learn the psychology. All the small nuggets of my experience I'm sharing, उनसे उनको बहुत फायदा हो. Again 476, 479 नहीं गया, ठीक है. It will go. I'm confident. ये जो structure बना है ना, that is giving me the confidence. Why? Because I've seen this structure so many times that I know for sure 479 आएगा ही. Now the 380 stop loss is all the way down over here, way beyond. And अपना जो 420 था उसके नीचे भी closing नहीं दिया उसने. See, 420 line के नीचे closing नहीं हुआ. So it has been saved. It's just a panic because जो लोग stop loss system में डालते हैं ना, उनके लिए ये है.
What's the status of Bank Nifty? 750, yes, perfect. मैंने बोला था 800 लेवल है, but it can at least go to 750, do some sideways and then final में देगा. So अभी बहुत लंबा टाइम पास होने वाला है, बहुत लंबा टाइम पास होने वाला है. क्या करें, निकल जाए क्या? बहुत लंबा टाइम पास. Done. 479 done. I'm out of this trade. I may take a trade if it goes above 510, 510. Right now, not very sure. Okay. See, all the setup is perfect. It's all good. But when it goes to 510, I want to first see whether this black line is already reached up or not. If it is, then that trade might not be successful. I don't want to be greedy on this one. I will only take it if that happens. Now, another reason I already told you is skill limit 500 है. तो 500 से ज़्यादा 520, 530 तक जाएगा, then again it will come down and close at 500. हो सकता है 600 तक भी जाए, and then it closes at 510 again. So I don't want to take the chance वो वापस 50 जाए, फिर वापस 50 नहीं आए, नीचे आए, उसका मतलब नहीं है. So let me just watch. If there is an opportunity good one, we will take it. Plus expiry day है, आज का expiry है next. Yeah, I don't know if you understand intrinsic value and that, but today the premium right now in this one is around 713. So this is 780, 70 पॉइंट्स का प्रीमियम है इसमें. अभी जो बैंक निफ्टी की वैल्यू है ना, उस हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 410. मतलब यहाँ होना चाहिए वो 410 कहाँ पे, यहाँ पे, पर वो है कहाँ पे, 480 पे. मतलब अभी भी 70 पॉइंट्स का प्रीमियम है जो नेक्स्ट 3 घंटे में जीरो हो जाएगा. वो एक्स्ट्रा 70 पॉइंट्स है ना, वो कम हो जाएगा. So that's why I don't want to take a chance now at this level. Otherwise, the setup is all good and fine. We have exited this also trade. Took at 380, exited at 479. A nice 100 points here, and another 60 points we got here. So 160 points in Bank Nifty we have covered today. Okay. We आज एक next trade that I'll be planning to take, which I'll keep an eye on, is on the put side. Yes, but not now. That trade will come at around 2 o'clock, 2:30. So till that time, just patiently watching the market. Will be in the market so that I understand what it is doing, how it is trapping people. So that's why I'll be in front of the market. But my trade planning will be after 1:30 to 2:30. A small trade, whatever profit आज बना है, जो भी profit, उसको lose नहीं करना है. उसका एक छोटा सा portion use करना है.
खाली to take one trade on the put side, that too not now, after 130 अगर opportunity आई तो. Okay, because expectation is कि I'm not expecting market to close at the day's high. पूरा नीचे आएगा लास्ट में, वो जो फॉल आएगा उसको कैप्चर करने के लिए, नथिंग एल्स. So a very small quantity, just to take it, but that too not now at 130. So let me see what is the status of put, which put can be planned. 45,800 or actually 45,900, because 45,800 पे मार्केट क्लोज हो सकती है. तो एक लेवल ऊपर अगर जाए हम लोग 45,900 कौन सा put, which is right now at around 140 rupees. इसका चार्ट लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको निकाल के हम 45,900 का पुट लगा देते, 142 पे. See, all this highs made, now it is coming down. अभी ये जब नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे टच हो जाएगा, तभी एक मौका मिलेगा, which will be somewhere around 1 o'clock के बाद. तो तभी हम वेट करेंगे सुपर ट्रेंड के लिए. All those things I'll tell you how to go about it. I'll show you an example previously that it has happened like this, which we saw, I think, in the call side. नहीं, निफ्टी में था ना. Where did we see it? See this one. 3 times did, came down all the way. ये नीचे आ गया था, तो अभी भी उसके नीचे आने का स्कोप है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट. यस, बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का भी स्कोप है, बट दैट लास्ट 50 पॉइंट्स के लिए आई डोंट वांट टू एंटर. वो लालच के चक्कर में यू विल लूज मोर, सो आई डोंट वांट टू एंटर ओवर देयर दिस टाइम. व्हाई इज दिस? So now I will wait for a put side trade, which will come little later. At least 1 hour it can take for it to come. So we have time. Just watch the market, try to learn what it is doing. And plus, you can also watch this part. What I've told you, this strategy, it will go and touch the red line. That will be the final target for this one. But like I said today, with being live with everyone, I'm not taking that. I've exited this thing, and that will be the final target for this one. Okay. Once that happens, then no more call trades for today. Hi, how are you? Good. No stories. $527. Nice move. 550 तक जाने का मुझे स्कोप दिख रहा है इसमें. But as I said, I'm already out of it. Call side में I'm done for today. It can go till 600 also, but I'm done for today. This will be the final target. Final target. Once they both touch like this. Now my eyes are on the put side, which has fallen down today. If you see today's high, आज के इस पुट का हाई क्या है? 565. 555 से जो पुट नीचे आते हुए 500, 400, 300, 200, अभी 113 तक आ चुका है. उसमें मेरी नजर है, क्योंकि उसमें जो बाउंस आएगा, डेड कैट बाउंस लेटर ऑन, अभी नहीं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे, बट विद स्मॉल क्वांटिटी. So we are keeping these two in radar, so I'll keep them at the top. Fantastic. तो ओरिजिनल एंट्री था 200 एंड कितना था, 230 240 पे, ऑलरेडी डबल हो चुका है. बट इट्स इजी टू से कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. To actually get that double triple, you need to play that game that way, with that mindset. In this entire move, we took 2 trades, one over here and the second one from 380 to 480. हमने 2 trades ली. Since we're out of the trade, let me do one thing. Let's again connect back at 130. Yeah, I will take a half an hour break. I'll close the streaming and I will start the streaming again, another one at 130. Right?
So we'll be stopping this and we will start again streaming at 1:30 live. What I'll do is I'll just keep this on instead of closing and starting again. I'll just keep this one on and I'll be back in 30 minutes at 1:30, maybe 5 minutes before that, because the market might give an opportunity at 1:30. That is the time. If the opportunity is there, we'll take it. So I'll see you guys at 1:30. Hello. Okay.
Guys has gone to 640. Wow, 660 levels. Oh, amazing. What a move by the market. Chalo, good. Good that we did not enter into the put side. We are waiting till 130. Absolutely fantastic. 668 tak. Nice, nice. Whatever the market makes, whatever the market movement does, we will only get what we deserve. Okay? जितना हम deserve करते हैं अपने को मिलेगा. Okay, finally this thing has touched but. Okay, so we are in live at the right time. I don't know if anybody is there, but we are at the right time. Am I audible? Am I audible? We are there at the right time because now the target is reached. The target was this touching the red line. It is reached, and just now, unbelievable, perfect timing. Just now, after touching that, it has caused the super trend. So now is the time we'll look at the put. The put is all the way down at 67. I'm going to take one single trade, small trade, one lot at this to test the waters, just to test the waters. If the waters are there ready, because it's possible it's not ready, then it will fall from here also. And this 65 can become zero. So instead of doing that, let me do one thing. Let me remove this also. I'm going to go with the even higher one. I'm going to go with the Banknifty 46,000 put. Banknifty 46,000 put. Am I audible, guys? I don't know if I'm audible. Is this working? If no reply is there, that means I'm not audible. So let me check the mic. I'll rather take my trade first and then we will discuss. $123. There's 123. Small quantity. Done. Okay. Looks like my mic is not working. So there is no audio. $46,000 and 30. Perfect. This I believe will go down till 80. Ideally, it should have gone down till 80. Let's see. Oh, it's working. Thank you, Karmani. Okay, I was wondering why there is no response. Maybe it's not working. Thank you so much. Okay, so I was saying that I've taken a very small position at this level in 46,000 P because the timing is right. 130 plus the target of the call side is over. But just because the target of call side is over doesn't mean that it cannot go up. Doesn't mean that the put has to go up, right? It doesn't mean all that. So although I've taken this, the target will be very small scalping trade and small quantity. Now my goal is going to be for the rest of the day to protect the capital that we have made.
around 2.5% of the total capital. Whatever we have made, to protect that, at the most, I'll take a risk of 0.5% from it. If you made 2.5% of the total capital, उसमें से 0.5% का इसका ले सकते हो total capital का, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा. This is where overconfidence comes in. कि आज तो सब पेज सही जा रहा है, everything market is in my favor, whatever I take will become successful. That is, don't go into that. कि उसमें बहुत पैसा चला जाएगा. So what we are going to do is we are going to look at it from a objective point of view by considering only a small capital, small risk to increase the profit little by little, drop by drop. No big profits we are looking at now for the rest of the day. So why did we take this trade? One is all these indicators have come down. Second reason, on the call side, all the indicators are reached at about top level. Now there is another chance that can come on the call side, but that will come once the price has again started to come at least till here, like this, or maybe all the way down. Don't know. What will be the stop loss? Simple. If this thing has happened, super trend is hit. Remember, we did the same thing over here. Target reached, super trend came down. Once again, it went up, we enter. But this time, we are not going to do that. If it goes up once again, we will not enter this trade. We'll simply exit the put trade. So we'll keep an eye on the call side. We'll not keep an eye on the put side. We'll keep an eye on the call side. If at all the call goes up again about the highest level today, which is, what's the high it made? Oh, 45,800 की जगह पे 40,900 पहुंच गया market. Okay, let's evaluate. It has already broken yesterday's high. Let's look at the candle. This is interesting. Very interesting. Wow. What a beautiful candle. I've never seen this. Open equal to high, fully recovered in one day. Amazing. And made the high. My expectation is, this is probably my expectation. I have no reason why I'm saying this. Market should close somewhere over here. What is this level? What is this level? Let's see. 45,768. 45,768 is what I will expect, but I will not take a trade based on that. I'm just saying this. I'm not going to take any trade based on that. Opinions do not matter to the market. Market को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा opinion क्या है. So already put का एक trade लिया है, but वो scalping के लिए लिया है. So let's see where it is. Oh wow, it has given profit. Let's look at the put. 126 has become 140. So let me take out some profit from it. Excellent. Okay, good. $150. चलो good है, ले लेते 150. I placed the order at 150, got executed at 153.2. Okay, done. One quick scalping trade done, but it was not a scalp, it was a good trade in fact. We entered at 126, exited at 153. So around 27 points, 27 points, yeah, 27 points we got. Nice. See, this is a good thing. What I observed is when you take a break and come back, it's very important to take a break in between. So I missed that in the last 2 days. Yesterday I took a break, but I never came back. So I apologize for that. But day before yesterday, I forgot to take a break in between, which is important. Your mind needs reset so that it can come and play for a second innings. Good. So we already taken one trade in the second innings, successful with 27 points. Beautiful target we got. Only simple one reason, I'm not playing for big targets now. Okay, small trades, small capital, and playing for only small targets, trying to maximize the profit as much as possible by taking a small risk. That is the goal. Because it's expiry of Banknifty, entire profit can get wiped out if you're not careful. Entire profit. Okay, let's look at the charts again to see any opportunity in Nifty. What happened to Nifty trade? We had taken a Nifty trade. It's 237. It had gone till 260. Oh, mind blowing. 260 is the target reach, but 15-minute chart, no, it is still not reached. Target is still not reached. So we are still holding this trade, Nifty trade. Okay, that is, anyways, I told you, it can go till tomorrow also, and it can give you a loss also. All possibilities are there, but this is a different level trade. It's a 15-minute trade. We don't need to keep looking at it. We already 20% profit in this since the time we took the trade at this super trend exactly.
We're already in 20% profit. It had gone till 30% profit, but as I said, maybe when the time comes to book, we might be at break even also. I don't know. I've seen different targets in this one: 10%, 0%, minus 10%, 60% also. So I don't try to put a target over here. I just wait for it to go up. And once it goes up and touches, I will just exit whatever the state is. And I'll evaluate that time also. Okay. Where did this come? Okay, from 660, this has fallen down to 590. Banknifty. Quite a nice fall came after this target was hit and the super trend came down. Perfect top it has formed. Now, after forming this beautiful top, if it decides to go up again, that means market has something really surprising for everybody today. It will be really surprising to see a big bullish engulfing candle getting formed, which is already formed actually, bullish engulfing, but closing above, that will be extraordinary, extraordinary. That's why I'm saying I'm not expecting that. I'm expecting 786, 45,786, maybe the level, another 100 points down. But that is just an expectation, not a given. I'm not confident about that. The way I was confident in the morning trade about the call side. Okay. So I took a trade, I exited also, even though it can go up all the way till 225, doesn't matter. I have taken a trade, I exited with 30 points over here. Small trade, quick trade, 27 points, sorry. And it is done. Now, what other opportunity can come? Now, another opportunity that can come is, even though this has done, this has gone up, it can still pull back, can do a pullback and come down to 111 level again. This is the 111 level, the red line. That means on the call side, it will have gone up and closed about a high, right? So whether to take a trade on the put side again, no, we'll not take a trade on the put side again. So if it goes and closes above this, we'll not take a trade. But if it doesn't go and close above and again comes down, that means there is a chance that put trade is going to stay for some time. It's going to stay for some time. Okay? But there is no guarantee. So we'll not enter into this trade right now. We got a good trade, super trend के वजह से, perfect timing, perfect setup. We took the trade, we got the profit. No need to again enter. We'll just stay on the sidelines. What we exited at 153 live is now 127. This is what happens on expiry day. Crazy movements, 10% up, 10% down in just 2 minutes, right? So that's why we have to be so careful about our capital. That's why I keep saying this from Monday, day one I've been saying this. आपका कैपिटल ही आपकी जान है, वही आपको नेक्स्ट डे वापस ट्रेड करने के लिए बैठने देगा. कैपिटल चला गया तो वो नहीं कर पाओगे आप, right? So that's why we will stop over there. Will not take a trade. Okay. So what opportunities can come now? Let's see. Any other time frame? Because today's trade, it seems, is done. Except for one put trade that can come again after some time, around 2:30. That is also provided if the put doesn't fly away right away. If it still stays over here, then the trade will come. Other than that, I don't see any opportunity coming in the market now. Let's wait. Let's be patient. Let's see if something comes up. We'll take it. Okay. We'll keep an eye for it. In the meantime, if you have any questions on any stock or anything, you can ask. Oh, we have a class today, right? Oh, I forgot. 9 o'clock. Let's look at option chain in the meantime. Bajaj Electric. After that full fall yesterday, it is in the green so far. No issues. BPCL. Again, the same thing. Which is the top gainer today?
Nifty top gainers. Hmm. All India, Yasin, Titan, BPCL. Okay, and top losers, HDFC Life, L&T, Adani Ports. Not a big movement in any of the stock. 50-50, okay. What about the next 50? 2% is the max. Losing is 2%. There is no real big moves in any of the stock today. India Bull Housing Finance, 9.7% and Glenmark. Okay, let's look at India Bull Housing Finance. Where did this come from? Oh, just missed it. The blue arrow would have come yesterday if you just missed it. But I think the opportunity will still come. Okay, the opportunity is still going to come, is what I believe. Let's wait for this black one to come a little lower. If the black line comes a little lower, that will be a good time to enter. But if it runs away, it runs away. Fine. Oh boy, this stock is not that great, but it is now started to move up. The last trade it gave was a 15% loss trade. Now it has finally caught up. Is this what I think it is? Is this? Let's look at the weekly chart. Oh my God. India Bull Housing Finance is that kind of a stock, okay, which has never gone up. Even in the 2024, it didn't go up, did not cross the high of 359. The broad resistance is इसके पास, but finally now it is going up with 9% move, phenomenal volume day before yesterday, last to last week. Now falling down and creating bottom over here, going up. This bottom is coming from where? At the 30-minute chart. This resistance converted to bottom. Is it zone? So it has taken support at a good level. Does it have the strength to carry on? Okay, if India Bulls Housing Finance can cross 190, India Bull Housing Finance can cross 190, the total V-shaped recovery, and can expect it to go. This was a resistance, became support, became resistance. Okay, so this is clear. Breaks this after 190. This is the next level, 206. If it breaks that, then we have bigger targets that can come up. Till that time, it may not go up, it may go up. We don't know. Good. But if it breaks this level 206, I think it is totally out of the woods. 92, say 152, that's a 60-point move, which will be another 60 point on the top, 216. Same level targets will come, but then this levels will open up 277, 318, and 355. As of now, it is just made a higher high, and a higher low is possibly it will make, but that will only get confirmed once it goes and closes about 206. If that happens, I think India Bull Housing Finance is coming out of its dead zone, sideways zone for so many years. Wow. Okay. And I was looking at this. This is very weak. By that time, even this black line will come up. So we might be in a good shape. Yeah. Okay. Let's move back to our
what happened to the call? Yes, the call target was done 660 and it came down to 560, 100 points fall from the top. Can we enter again once it comes down? Because the setup is coming up. The setup of red line at the top, black line at the bottom is again approaching. Will we take that trade or not? Now the question is after 2 o'clock, okay? That's why I said there are a lot of factors, right? This only comes into play when you do a detailed study. 2 बजे के बाद अगर ये सेटअप बनता है तो yes we can take the trade, but उसके chances of success थोड़े कम होते हैं. तो उससे अच्छा इस ट्रेड पे फोकस करने से अच्छा है. We have already taken a call trade right in the Nifty. ये तो हमारे पास है ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. तो ये ट्रेड तो नीचे नहीं जा रहा है, ये 100 पॉइंट नीचे चला गया, बट ये ट्रेड तो अभी भी वही का वही है, 240 पे ही चल रहा है. So that means we have space over here. तो क्यों सब पैसा कॉल में डाल देना है? Let it wait. Let's see on the put side what is the opportunity. But if this is coming down, then put में opportunity हाँ हो सकती है ना, क्यों नहीं? Put में भी opportunity हो सकती है. So let's look at the put. Put में थोड़ा ही space है. Let it reach over here. अब put में बहुत clear है. कल मैंने I think एक चीज आपको समझाई थी कि जब ये black line ऊपर पहुंच जाती है, उस टाइम पे अगर by chance ये रेड लाइन जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ब्लैक लाइन ऊपर पहुंच गई बट रेड लाइन ऊपर क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो दैट मींस के देयर इज नो स्कोप ऑफ पुट टुडे. अगेन देयर विल बी अ बिग फॉल, अगेन इट विल बी हैविंग अ बिग फॉल एंड देन मे बी सम चांस विल कम एट अराउंड 230. okay, अगर ऐसा कुछ हुआ तो. पर अगर ये ब्लैक लाइन ऊपर पहुंचते ही रेड लाइन ने भी ऊपर क्रॉस कर लिया, अगर ऐसा होता है तो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी कैन एंटर इनटू द पुट. अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अपने को, अच्छा खासा मूव आ सकता है पुट में, अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है. टोटली एक्सपायरी मूव जो होता है ना अनएक्सपेक्टेड, वैसा कोई मूव आ सकता है. तो हमको क्या करना है उस टाइम पे? सिर्फ स्टॉप लॉस पे नजर रखनी है, स्टॉप लॉस रखना है एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना है. ऊपर का टारगेट नॉट इन आवर हैंड्स, कैन बी बिग आल्सो स्मॉल आल्सो, पर नीचे का जो स्टॉप लॉस है दैट विल फिक्स इट एंड वी विल टेक अ ट्रेड अकॉर्डिंगली. ओके, एल्गो ओनली टुक 2 ट्रेड्स सिंस मॉर्निंग, दोनों सक्सेसफुल थे, सी साइड के थे इसके लिए, बट नो अदर ट्रेड आफ्टर दैट इन एल्गो. अभी एल्गो इज एक्चुअली लुकिंग फॉर पुट साइड ट्रेड. एल्गो भी अभी वेट कर रहा है पुट साइड के ट्रेड के लिए. अगर आएगा तो लेगा, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं लेगा. आई वॉन्ट टू स्लोली एंड स्टेडीली कन्वर्ट ऑल द स्ट्रेटेजीज इनटू एल्गो. अभी मैंने खाली एक ही स्ट्रेटेजी की है, उसका एल्गो चल रहा है, पर ये सब जो स्ट्रेटेजीज आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे वो सब मुझे एल्गो में डालनी है स्टेप बाय स्टेप. तो बहुत काम है, इट्स इंटरेस्टिंग वर्क. ओके, सो इज इट गोइंग टू क्रॉस? लेट्स ड्रॉ द लाइन इन 25 रखते हैं. नहीं क्रॉस कर पाया, ब्लैक भी पहुंचा नहीं है, बट फिर भी रेड लाइन अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है, सो चांसेस तो लो ही है कि कुछ कर पाएगा वो. Just a minute, I need to take this call. I'll be right back.
एज एक्सपेक्टेड मार्केट वापस नीचे आ गया पुट, एंड कॉल वापस से ऊपर की लेवल को टेस्ट करने के लिए गया है। यहाँ पे चांसेस है कि टेस्ट करके सक्सेस होगा कि फेल होगा पता नहीं, बट चांसेस है कि पुट में एक ट्रेड देखते हैं 80 पे जो आ गया है ऑलरेडी, वेरी गुड। 80 इज अ गुड लेवल है बाय द वे। जब यहाँ पे था तभी आप अकॉर्डिंग यून करके देख लेना कि 80 पे आता ना तो बेस्ट लेवल होता, अभी ऑलरेडी 80 पे आ गया है। बट हम लोग गाय नहीं करेंगे बिकॉज वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे ग्रीन लाइन नीचे आ गया, रेड आ गया, ये सब भी नीचे आ गए, ब्लैक शायद ना भी आए क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम पास में आ चुका है, रिसेंट पास में। नाउ विल वेट फॉर सुपर ट्रेंड। यहाँ पे मैं एक सुपर ट्रेंड के लिए वेट करूंगा। सुपर ट्रेंड अभी 109 पे चल रहा है, प्राइस 78 पे है, बहुत गैप है 1 मिनट में, मतलब कि 4-5 मिनट के बाद एक ट्रेड आने की संभावना है यहाँ। सो विल वेट फॉर 4-5 मिनट्स एंड आई विल गिव एन अपडेट इन 4-5 मिनट्स अगेन। एज ऑफ नाउ तो पुट में चांस नहीं है, लेना नहीं है हम लोगों को, लेकिन चांस आएगा तो लेंगे क्योंकि ये अगर गलत जगह पे ले लिया हमने तो ये सीधा 85 का 75, 65, 55, 45, 35 होते हुए उसको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अभी एक्सपायरी है नेक्स्ट 1.5 आवर में, ये जीरो भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम कम क्वांटिटी नहीं करना है तो चलेगा, इट्स ओके, अगर नहीं लिया तो भी चलेगा। जो 27 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिए हैं उसी 20 पॉइंट्स को हम डाउ पे लगाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट इज हाउ यू डू एक्सपायरी। ओके, सो वैल्यू इज एट 103। हेलो, हेलो, यस। तो ये ब्लैक जब ऊपर गया था तभी रेड लाइन ऊपर नहीं क्रॉस कर पाया, मतलब पुट में वीकनेस है, इसीलिए ब्लैक लाइन ऑलरेडी नीचे आ गई है। एवरीथिंग इज कमिंग डाउन, पुट्स आर फॉलिंग डाउन क्रेजीली। आज इमेजिन कीजिए जिसने पुट लिया होगा 500 आसपास, 500 600 और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए रखा होगा पुट, आज 500 वाली आइटम 83 पे आ गई है, एंड अभी भी चांस है कि और भी नीचे जा सकती है। वन साइडेड मूव है मार्केट में, एंड हमने सुबह को ही पकड़ लिया था कि आज मार्केट में वन साइडेड मूव होगा बेस्ड ऑन अवर लॉजिक ऑफ 1140। इफ यू रिमेंबर, हमने बोला था 1140 के पहले अगर वो चांस हो गया जो हमने बोला था रिवर्सल वाला ट्रेड, तो आज फुल डे मार्केट वन साइड रहेगा। अभी जो हम ले रहे हैं व्हाट इज अ वेरी रिस्की ट्रेड, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज बहुत अप डाउन होता है इस मूवमेंट में। आई विल सजेस्ट ओनली टू वॉच, जो भी लॉस होना है मुझे होने दीजिए, आप खाली वॉच करके लर्न कीजिए, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू ट्रेड, बिकॉज इसमें लॉस होने के चांसेस है, इसलिए मेरी क्वांटिटी इसमें सबसे कम होगी, ये bare मिनिमम।
क्योंकि इस बहुत ही रिस्की ट्रेड है. इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड इन अ वेरी बुलिश मार्केट. अगर हम इसका ट्रेड देखें, ओ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल formed before the resistance level, way before the resistance level, means the market wants to do a very quick breakout. Okay, let's see. No comments on that right now. Okay, super trend लगा हुआ है यहाँ पे 95 पे. Time is almost 2 o'clock. अच्छा, बहुत ही risky time है. Let me check Bank Nifty on a 5-minute time frame first. उससे थोड़ा आइडिया आएगा. 5 मिनट में उसने कुछ किया ही नहीं. ये जो हमने लिया था वो है. उसके बाद नहीं 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 नहीं, यहाँ पर नहीं ले सकता मैं. यहाँ पर पुट लेना will be like, यहाँ पर पुट लेना बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन लेट्स लुक एट दिस वन. सब नीचे तो आ गए, मतलब सपोर्ट तो है अपने पास. और इतना छोटा स्टॉप लॉस है 81 का. 100 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स अपने लिया है, वही है. बातों में सोचते ही सोचते प्राइस निकल गया है. तो लेट इट बी. नो पॉइंट चेजिंग इट. आई एम लेटिंग दिस ट्रेड गो. while I was thinking and checking things, काफी ट्रेड ऊपर चला गया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड. स्टॉप लॉस बहुत छोटा था इसमें, 92 से लेके 74, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था. टारगेट वुड हैव बीन अराउंड 140, 135 जितना टारगेट है. देखते हैं. चलो, तो मैं भी ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ आपकी तरह. आई विल आल्सो बी ऑब्जर्विंग दिस ट्रेड. आई एम आल्सो नॉट टेकिंग इट. So let's understand why we missed this trade. What did I do? I was supposed to check this Bank Nifty, which I saw that this entire movement, ये ट्रेड तो अच्छा मिल गया अपने को, बट यहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी जिसकी वजह से ट्रेड आना नहीं आना गारंटी नहीं था. ये वाला ट्रेड रिस्की था, नो डाउट अबाउट इट, अभी भी है. अगर इसने फॉल दिया तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है, मतलब 140 तक का दे सकता है. बट रिस्क तो है इसमें. तो गुड. हुआ अंगूर खट्टे थे. ओके, कॉल साइड में इट वाज नॉट एबल टू कन्विंसिंगली ब्रेक एंड इट इज रिवर्सिंग. डबल टॉप बना रहा है. ओह, फाइनली मुझे डबल टॉप दिखा. या डबल टॉप बना रहा है स्टॉक. जब इसके नीचे जाएगा तो इट कैन फॉल टिल 495, 500. गुड. शैल आई एंटर अगेन? नो, डेफिनेटली नॉट. ये सुपर ट्रेन फेल हो गया है, तो अभी हम सीधा डायरेक्टली नेक्स्ट सुपर ट्रेन के लिए वेट करेंगे, विच कैन बी समवेयर ऑन 74 लेवल्स. देखते हैं. मैं एक लेवल और ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि इसके जीरो होने के चांसेस बढ़ गए अभी. बैंक निफ्टी 46,100 पुट. आई प्रेफर टू टेक इंडियन मनी ट्रेड, तो टोटली जीरो ना हो जाए. ओके, इसका क्या सीन है? लेट्स सी 5-minute चार्ट. 800 से नीचे आया है, ऑलमोस्ट 80% डाउन टुडे. दिस वाज द प्लेस, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी. डबल बॉटमिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, तो वी कैन कंसिडर दिस. आई विल जस्ट बैक इन 1 minute.
सुपर ट्रेंड वापस एक टाइम लगेगा यहाँ पे, 2:06 हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में द मूवमेंट इज बिकम वेरी सबसाइडेड. कैन इट टेक आउट? लेट्स लुक एट ऑप्शन चेन वन टाइम. बैंक निफ्टी फुल डे, वो तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग में ही होगा. यहाँ पे कहाँ पे अभी सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है? 11 लाख ओनली, 5 लाख ओनली. इतना छोटा अमाउंट दिखा रहा है. नेक्स्ट वीक का है, अच्छा ये वीक का देखना. ओके, सबसे ज्यादा अमाउंट है 46,000 पे. अगर वो ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ा मूव 200 पॉइंट का और आ सकता है. तो अगर हमने पुट लिया भी तो उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वो भी सिस्टम में डालना पड़ेगा. उस टाइप का प्लानिंग करना पड़ेगा तो ही ट्रेड लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए. अदरवाइज तो अभी शॉर्ट कवरिंग ही चल रही है. नेक्स्ट वीक का भी जब हम देख रहे थे तो उसमें भी 46,000 में एंट्रीज हो रही है. मीन्स के अगर, लेट मी जस्ट थिंक फॉर मोमेंट बिफोर प्लानिंग, नेक्स्ट वीक में भी शॉर्ट कवरिंग हुई, पीपल बुक लॉसेस, ठीक है. 46,000 का डेफिनेट स्ट्रॉन्ग वो है अभी तो रेजिस्टेंस, एंड उसने मेंटेन रखा है उसको. लास्ट 10 मिनट्स में सबसे ज्यादा 46,100 एंड 46,000 पे सेलिंग हुआ है, और इस बाजू 46,000 एंड 15,000, 45,900. ओके, सो मतलब अभी भी 46,000 पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है चालू लास्ट 10 मिनट्स के डेटा के हिसाब से. सो दैट मीन्स के 46,100 का पुट जो हम ले रहे हैं उसका 100 रुपए का वैल्यू तो मिलेगा ही. तो ये जो अभी सुपर ट्रेंड लगा है, आई एम टेकिंग अ स्मॉल ट्रेड ओवर हियर. $178 का भाव चल रहा है बैंक निफ्टी 46,000. टारगेट होगा 240, 238, 238. टारगेट 238 है. लेट्स वेट एंड सी इफ इट हिट्स. सिस्टम में डाल दिया मैंने ऑलरेडी टारगेट 238 का. वीवेब से थोड़ा ऊपर है तो हो सकता है ना हिट हो, ठीक है. अगर नीचे आना चालू हुआ तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा. मुझे थोड़ा महंगा मिला, आई गॉट इट एट 185. थोड़ा महंगा मिला मुझे, नॉट एट द लेवल ऑफ क्लोजिंग. 178 की जगह पे 185 पे मिला है, बट इट्स ओके. दिस इज माय स्टॉप लॉस 141. तो नीचे भी ऑलमोस्ट सेम रिस्क है, ऊपर भी सेम रिवॉर्ड है. इट्स नॉट अ बिग वेट, एज आई टोल्ड यू. दैट्स व्हाई द क्वांटिटी इज लेस एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेट. कॉल ने डबल टॉप बना दिया था एंड अगेन ऊपर जा सकता है, पॉसिबली लेस हो सकता है. एक बार 150 के नीचे आ गया तो मैं इमीडिएटली जाके स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल लूंगा 135 का. टिल दैट टाइम जरूरत नहीं. लेट्स वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस.
Price is neither going up nor going down on the put side. And it was just waiting for me to say that. Okay, let's see. We have kept our stop loss over here. We have kept our target in the system. Whichever comes first, we'll exit. Both are equidistant. Both are 1:1 right now because it's a very small trade. Doesn't make a big impact in the profit also and doesn't make a big impact in the loss also. Double top is formed on the call side, which is sustaining. It is not breaking downside also, but not falling up also, going up also. So one thing that is happening is on this front, that setup that I was talking about, the good that we did not take this setup. As I told you, there are many combinations. Because multiple times it happens, then the frequencies, at one point it has to break, right? So when the first one comes, it is the most successful one. Second one, the frequency, that means the chances are very less. Still, it has given some movement. Third one has not come only, but the second one itself is kind of a failing if this red line comes down totally. Now, what will happen over here is this blue line, since long time has not come down. Full entire day, almost since 11 o'clock, it went up. It has not come down. So now is a chance for this blue line to come down. And in that, it will break this level. And VWAP is all the way down. So I don't think it will come all the way down here. But there is a chance that now it can break this level. Let's see. We are not going to take any trade. We are just observing the market. We have already in the trade at this point, which is minus 10 points in loss right now on the Banknifty, with a target of 238, which has gone about a VWAP and yellow line, and a stop loss of 135. वन ऑब्जर्वेशन एक जो आपको देखनी चाहिए, लेट्स यहाँ पे मार्केट फॉल होने के बाद साइडवेज हो गया. साइडवेज होने के बाद जब ये ब्लू लाइन को टच होता है, रेड लाइन को, तो वापस फॉल होता है, फिर वापस साइडवेज हो गया. अब यहाँ पे फॉल छोटा हो गया, लेकिन द फॉल हैज बिकम लेस. That means it is kind of giving a hint that it can happen a double bottom. यहाँ पे डबल बॉटम हो सकता है, और उसके बाद चांसेस आर के टारगेट हिट हो सकता है. मतलब कि इट इज पॉसिबल कि मेरा स्टॉप लॉस हिट करके बाद में टारगेट हिट करने जाए. बट क्या करें, अभी वोलेटिलिटी इतनी हाई होती है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कि अपने को उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते. तो हो जाए तो हो जाए, एक टाइम स्टॉप लॉस हिट चलेगा, बट वी कैन नॉट कीप अ बिगर स्टॉप लॉस देन दिस. तो वी विल टेक दैट whatever the market gives, we'll take happily. बहुत ही अच्छा दिन दिया है मार्केट ने, तो we'll take it happily. कल के लिए BTST ट्रेड एक देख के रखते हैं हम लोग. लेट्स ओपन अप एंड सी. एक BTST ट्रेड देखना है अपने को. ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक निफ्टी. एक्चुअली निफ्टी का एक्सपायरी है ना कल, तो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दैट. कल निफ्टी की एक्सपायरी है. निफ्टी इज गोइंग ऑल इन विथ सुपर्ब शॉर्ट कवरिंग ऑन द कॉल साइड. क्रेजी शॉर्ट कवरिंग. एंड ऊपर की बाजू 2 लाख, खाली 2 लाख का सेलिंग है एट 20,200, जबकि नीचे 1.5 करोड़ का सेलिंग हुआ है एट 20,000 लेवल्स. सो 20,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी ने बना लिया आज. एंड इस सपोर्ट के नीचे वो कल एक्सपायरी देना मुश्किल नहीं, बहुत ही नामुमकिन है. बिकॉज 1.5 एंड 1.25, या बहुत ही मुश्किल है. ऑल्दो आज ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है, उसकी वजह क्या हो सकती है कि 55,900 खाली, बहुत कम सेलिंग हुई, बिकॉज 20,050 एंड 20,100 पे भी इतनी सेलिंग हो गई. तो बुलिशनेस बहुत ही ज्यादा है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से. दैट मींस वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप, और हम अभी लेके बैठे पुट ऑन द बैंक निफ्टी. सो वो पुट खाली टेम्पररी है अभी के लिए, एक्सपायरी के लिए. ज्यादा लंबा हमको उसको खींचना नहीं है. वी विल एग्जिट इट इमीडिएटली एज सून एज दैट हैपेंस.
अगर ऊपर चला जाता है, अपना स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम लोग निकल भी जाएंगे। मार्केट बिल्कुल नीचे आने के मूड में नहीं, क्लोजिंग आज ऊपर ही देगा, हाई पे ही देगा लगता है। स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया मैंने अभी, टारगेट चेंज करके पहले स्टॉप लॉस डाल दिया, अगर हिट होगा तो पहले स्टॉप लॉस होगा अभी शायद, तो उसको डाल दिया सिस्टम। And I think it is correct. Yes, stop loss is hit and we are out of this trade. Good. यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया था। 27 यहाँ जो मिला था उसमें से 50 हमने दे दिया। नेट नेट वी आर इन गुड प्रॉफिट्स, बट वी गिव अवे बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी कम थी, यहाँ पे कम थी, यहाँ से और भी कम थी, तो वी आर फाइन। अभी इसका मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, ऑप्शन चेन भी वही बोल रहा है, कॉल भी वही जा रहा है ऊपर की बाजू। तो कैन वी प्लान अ BTST ट्रेड? BTST trade, let me see, is there an opportunity? Oh, one thing interesting, if you see this red line, we had marked at this level around 25, अभी ये 35 तक पहुंच गया है, एंड उसने स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चलना चालू कर दिया। यहाँ पे एक डाउट है कि इज इट ट्राइंग टू ट्रैप पीपल? अगर ट्रैप पता चल गया तो मैं वापस ट्रेड लेने में हिचकिचाऊंगा नहीं। यहाँ पे ट्रैप, हेलो, चलो सुपर ट्रेंड को चांस देते हैं। सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हुआ, वॉट एवर द प्राइजेस विल टेक अ ट्रेड फॉर 30 पॉइंट्स। अगर रियली ट्रैप है तो इट शुड क्लोज अबाउट सुपर ट्रेंड विच इज 166। तो मैं एक सिस्टम में ऑर्डर डाल देता हूँ 166 के ऊपर ट्रिगर प्राइस। अगर होना है तो इमीडिएट फास्ट मूव आएगा, तो आई विल टेक ओनली इफ इट गोज अबाउट 160। नहीं हुआ ना, 130 140 पे आ गया, फिर भी एक ऑर्डर डाल के रखता हूँ मैं, इन केस इफ देयर इज अ क्विक मूवमेंट दैट कम्स, विल टेक इट। ऑर्डर सिस्टम में 166 का स्टॉप लॉस बाय है। इफ द प्राइस गोज अबव 166, it will automatically take the trade, and then I will immediately put a limit order for target also. रेडी रखा है मैंने ऑर्डर, अगर हिट हुआ तो मैं ऑर्डर टारगेट का भी इमीडिएटली डाल ही दूंगा।
पर मैंने रखा है 190। अगर आना होगा तो आएगा ट्रेड, अदरवाइज नहीं आएगा तो वी विल नॉट रन आफ्टर। सुपर ट्रेंड की वैल्यू नीचे आ गई है, बट अभी भी क्लोज नहीं हुई कैंडल, तो वी विल हैव टू वेट। लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग। तो वो ऊपर नहीं गया, विच इज फाइन, अच्छा हुआ। वी हैड पुट ऑर्डर एट 166, इट डिड नॉट गेट एग्जीक्यूट, and right now the super trend value is on 142, so I will keep on 148। मैं अपना वही ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ 148 के लिए। 148 bigger price is 148।
ऑल ऑफ दीज आर रीच बिलो, ग्रीन लाइन बिलो, ये दो बाकी है, बट बिकॉज एक्सपायरी मूव है, इट इज पॉसिबल इट कैन गो गिव अ स्पाइक, गिव एन एंट्री एंड देन अगेन फॉल, ये भी पॉसिबल है, इसलिए क्वांटिटी एकदम bare मिनिमम है। अनबिलीवेबल, 500 पे लग गया था कि आज इसका रेजिस्टेंस आ गया है, एंड दिस वेंट टिल 600, 700 पहुंच गया, माइंड ब्लोइंग, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। 46,100 पी भी 80 की तरफ भागते हुए, 80 is a level I love. I think 80 is a good bouncing level. अगर बाउंस मिलना है तो 80 से मिलना चाहिए। सुपर ट्रेंड अभी है कौन सी लेवल पे है? 129 पकड़ के चलो, 131। सुपर ट्रेंड 131 पर है। वन थर्टी वन। क्रॉस नहीं, 131 क्रॉस नहीं हुआ, 127 पे ही है, तो वी हैव केप्ट इट वेरी क्लोज नाउ। कैन गो इन स्पाइक एंड गिव अस एन एंट्री एंड देन गो टू 80 आल्सो, सीधा 50 पॉइंट्स नीचे जा सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, दैट इज द रिस्क वी आर टेकिंग। ओके, टाइम इज 2:44। So let's look at this, two consecutive green candles, ये third one doji जैसा बन रहा है, but अभी टाइम बाकी है 1 मिनट। Will it close as a doji or red candle? Red candle बना तो अपने को एंट्री मिल जाएगा, then it should fall. Let's see, did we get the entry? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, but एक्चुअल में जाके देखते हैं कि मिला है कि नहीं। Yes, I have taken an entry at 131, जो 166 पे लगाया था, फिर 148 पे लगाया, फिर 131 पे एंट्री लिया है, स्पाइक करके टच तो कर दिया उसने, अब वो प्रॉफिट देता है कि वापस एक लॉस ट्रेड देता है, दैट विल सी व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस इन दिस केस। वेरी स्ट्रिक्टली आई एम गोना कीप दिस लो 100। अरे यार वो तो हिट हो जाएगा मोस्टली, लेट्स सी 198 की जगह पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, 98 इन द सिस्टम, 98 इन द सिस्टम। मार्केट वॉच, स्टॉप लॉस लिमिट, फिगर प्राइस 98। अभी लास्ट 1 आवर में नो डिस्टिंक्ट स्टॉप लॉस इन दिस सिस्टम, स्पाइक में निकल जाए चलेगा, वी आर डूइंग ओनली 1 लॉट। ऊपर की बाजू टारगेट नहीं रखा है मैंने, नीचे की बाजू स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखा हुआ है। ओके, और सुपर ट्रेंड ने भी क्लोजिंग तो दे ही दी थी, तो एनीवेज वी कुड हैव टेकन दिस एट 123, तो अगर हिट होता है तो दैट इज ओके,
It is as per strategy. We are not going against it. Next week का जो है this one. नेक्स्ट वीक वाले में नहीं लगा था. हाँ, नेक्स्ट वीक वाले में नहीं लगा है. ठीक है, नेक्स्ट वीक वाले में सुपर ट्रेंड लगेगा तो एक्चुअल ट्रेड था. दैट्स ओके, वी हैव टेकन इट, वी आर इन द ट्रेड, स्टॉप लॉस इज इन द सिस्टम. ये हो सकता है अभी लगे लेट थोड़ा, बट वी आर इन द ट्रेड. नेक्स्ट वीक वाले में अभी तक सुपर ट्रेंड नहीं लगा. वो थोड़ा सेफ होता है, सिक्योर होता है, इट इज मोर मैच्योर. अभी अपना वाला जो है दिस वीक वाला, वो एक बच्चे ऐसा है, यहाँ वहां भागते रहता है, वोलेटाइल होता है काफी, नौटंकी नहीं. वन 135 तक गया. ओके, मतलब जाना चाहता है, पूरा स्ट्रेंथ चाहिए उसको. Okay, 141. ठीक है, let it go. I'm not going to stop it. I'm just kept my stop loss. I'm willing to take that stop loss, but on the upside, I'm willing to take a target of around 169. हाँ, तक देख सकते. Yeah, 169 तक देख सकते हो उसको. Maybe उससे भी ऊपर. Let's see. Ideally यहाँ से 50%, मतलब कि 155 तक तो मैं देखा उसको. उसके बाद का बोनस होगा. तो 150. मैं स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा अभी. जब 155 पहुंचेगा तभी जाके उसको मार्केट ऑर्डर बना के एग्जिट कर दूंगा. नाइस. बैंक निफ्टी में कैसा दिख रहा है? ओके, इट हैज मेड अ रेड कलर स्पिनिंग टॉप, मेकिंग दिस कैंडल. गुड फॉल, गुड फॉल. दैट मींस यहाँ पे 155 आ गया होगा. यस, लेट मी गो एंड एग्जिट एट 155 नाउ. लेट मी प्लेस एन ऑर्डर टू एग्जिट एट 155. ऑर्डर्स मॉडिफाई. बहुत टाइम जाता है मॉडिफाई करने में. The price is right now 140. So make stop loss hit, change कर देता हूँ अपना stop loss. I will make it to 140. दैट वे अगर उसको और थोड़ा ऊपर जाना है तो उसको स्पेस मिल जाएगी. हम तो प्रॉफिट में ही है तो अपने को प्रॉब्लम नहीं. निकल गया 140 पे, निकल गया. वी आउट ऑफ द ट्रेड एट 140. ओके, नॉट अ बिग ट्रेड. ठीक है. So last three trades there have been no profit, no loss, net net. And I think we are done for the day. 250. एक्सपाई मूव का एक चांस है. There is a strategy for एक्सपाई last half an hour. I'm just thinking what the market looks like. Is it the right time to take it? 1200. Mhm. 176 तक गया था. अच्छा, 155 expected था, but we did a little greediness. I did a little greediness, so we got some small profit on. ठीक है. I think we're done. Let me check. Why the move में कुछ possibility दे क्या? It's coming down 3 candles, 5 minutes. That means if we wait till 310,
there is a possibility of a trade. No, I think we should not do it. We'll close the day today. Any questions before we close about today's day? Any questions? Any questions? We can wind off. Okay. Thank you so much, guys. Thank you for joining in. And I will meet you in the evening for a class at 9 o'clock. And again, we'll see tomorrow morning in the live session. Thank you and bye-bye. Thank you, Sandeep. Bye-bye.